Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, everyone. Thank you very much for joining on this 5-day training program. Ladies and gentlemen, Punjab Higher Education Commission has undertaken this responsibility to support our faculty members in colleges and universities for their capacity building and training program in the coming years. And this important assignment is critical from the perspective of competencies, lifelong learning, and the new developments happening in modern times when new normal allow us to work online as well as on campus. And that has put a lot of challenges to our faculty members. And I'm sure that while you are contributing in your assignments in teaching, learning, and assessment processes, there is a need for regular kind of updation and training and capacity building. And the resource persons who are going to talk to you in the 4-5 days training program will be of great help to update you on the new developments happening in the field of education technology, e-learning, smart learning, examination, formative assessment, summative assessment, and how you can work in modular form so that you can be more effective in your assignments while you are interacting with the students in the classroom. In addition to that, there will be an updation on semester-based education, important elements, and how effectively semester-based education can do better thing as compared to other systems which are also available. In addition to that, pedagogical skills where you have to prepare yourself in terms of teaching and learning essentials so that you can be more effective in your lesson planning, in your goal settings, in helping the students in terms of counseling, and also to help in the cognitive domain when you are in the classroom, or attitude, knowledge, skills, and values, where psychomotor domain is important, affective domain is important. So as a holistic, it will give you a good blend of holistic education model through different themes, and as well as administrative responsibility that you are undertaking. And as you might be would like to have some sort of assessment on financial planning, leadership, motivation among the colleagues, as well as also providing motivation to the students, which is very important and critical from the quality perspective, as well as attaining the good standards of education. So this is a good blend of different topics in 5-day training program for the DG Khan division, and we look forward to have your support as well as feedback on this training program. And let me thank you all once again and welcome you. And also I would like to thank our resource persons, our colleagues, Dr. Shahid Imran, Dr. Fahad Noor, Dr. Amjad, Dr. Nasir Mahmood, Dr. Mavish Raza, Dr. Farhana Khurshid, Dr. Najma Najam, Dr. Ejaz Bhatt, Dr. Ali Sajid, Dr. Tanveer Iqbal, and Dr. Taiba Tamim. So I'm sure that these very competent people and resource persons will give you a good understanding and the new developments happening in the field of education technology and the topics that we have just been talking. And I wish you all the best, and let's please get started with the training session. Asif, over to you, please. Thank you. Thank you very much, sir, for sparing time to address to the participants. Now we are moving towards the first session of this training program, and this session will be conducted by Professor Dr. Shahid Imran, and I would like to give a very brief introduction of Dr. Shahid Imran to all of you before he starts. Dr. Shahid Imran is currently serving as Chairman, Mechanical Engineering Department, University of Engineering and Technology, Lahore. Dr. Imran did his Masters and PhD from Queen Mary University of London. Dr. Imran also served as Chair of the Department of Mechanical Engineering, UET, before proceeding to the United States on a very prestigious Fulbright Fellowship. He has authored a number of publications in different journals of contemporary relevance. Dr. Imran is a wonderful researcher, excellent teacher, and an outclass trainer. I would request Dr.
Shahid Imran to please take over and start the session. Sir, over to you. Thank you very much, Ashish. Can you please confirm that you can hear me? Sir, we can hear you and your slide is also visible. Okay. So thank you very much again for giving my brief introduction. On my side, the internet is slightly slow today, so I would recommend myself not to turn on the camera. Maybe in session number 3, I'll be back with the camera on. So my introduction has already been given. This is me, and these are some other colleagues who have participated in the preparation and preparation of the material, and they will also be helping us in conducting these first 2 days of this 5 days training workshop. Ladies and gentlemen, I would really request you to be very watchful the way we are conducting this day number 1, because the tomorrow's session, which is on the communication barriers and the practices and principles that we must learn as faculty members, you need to see how this day number 1 is conducted, and then see what we are preaching tomorrow. And then you need to find you will be able to find a consistency that whatever we are going to preach today about the communication process or the importance of communication or the do's and don'ts of communication, we have already implemented in our day number 1. So my introduction is already given. Here we have Professor Dr. Zulfikar Ali. He is chairman of the Mining Engineering Department and one of the early leaders in outcome-based education in the province of Punjab. Then we have Dr. Fahad Noor. He is professor of mechanical engineering and he specializes in andragogical and pedagogical skills. Then we have Dr. Amjad Hussain, who is a PhD from University of Lahore in human factor, and he does a lot of stuff on the emotional intelligence and some other related modules. He is director of continuing engineering education as well as the chairman of industrial and manufacturing engineering. He is also professor. And then we have Dr. Muhammad Amjad, who is the last member of this team. He is also involved in today's training. He's an associate professor and he specializes in semester-based regulations and the grading schemes. So these are some of the recent contributions that we have made through PHEC, through PEC in our personal capacity. We have done multiple modules on semester-based education as well as on outcome-based education and the process of communication or improving the workplace communication with a variety of public and private sector institutes. And one of them is our own employer, UET Lahore, multiple campuses and all across the campuses, most of the departments. Then Ghulam Shah Khan Institute of Engineering Sciences and Technology. Then we are very grateful to Worthy Chairperson, Punjab Higher Education Commission for imposing his confidence in us so that we can come and serve our very own people. And then we have worked with FAST, then MNU Multan, BZU Multan, Lahore College for Women University, and then we have Institute of Quality and Technology Management, Punjab University. Then we have this Fatma Jinnah Medical University, Faisalabad, King Edward Medical University. Then we have University of Faisalabad. It's a range of institute that we have covered. Just these are some of them to name actually. So, ladies and gentlemen, before we start this module, the day number 1 of this 5 days training workshop, we always have a standard formula. The standard formula is we have 1 plus 1 plus 2. So, we usually have a question to answer and then a little explanation. And then we have 2 expectations. So this is our standard. This is how we conduct these workshops. So we always start with a question, and then we have an explanation, and then we have 2 expectations. As I've already indicated, this is part of the scheme. If we are going to improve the process of communication between us and yourself, this is how we proceed. Now, what is the question? The question is, what is the question?
The question is, who do you think is the real beneficiary of this 5 days training workshop organized and arranged by Punjab Higher Education Commission? And if, especially if we talk about the day number 1 and the day number 2, which me and my team, we are going to cover, we have framed the whole material from the perspective of the participants. Now, the question, then who is the real beneficiary? Some of you, I mean, some of the participants, they may think that these are the PHEC people who are going to be the real beneficiaries, because PHEC is committed to improve the quality of education in the province. So this is their commitment, that they have planned this, so they are going to be the real beneficiary. Some others on the participant side, they may think that it is not the PHEC, these are the resource persons, the names that what the chairperson have just taken. So these are the people who are going to be beneficiary because they have prepared some material and now they have got an audience. Like any teacher, this teaching is a responsibility, but beyond responsibility, it is an opportunity. So we are going, these resource persons, they are going to come, and whatever they have prepared, they are going to share with the audience, seek the feedback, and they will improve their material. So they are going to be the real beneficiaries. Some other participants may think that the semester-based education or the other allied aspects of teaching learning process, these are the tools that every faculty member needs to have in his pocket. So these are actually the participants who are going to be the real beneficiary. Now there are 3 scenarios. The PHEC could be a beneficiary according to some of the participants. Other participants, they may think that these are the resource persons who are going to be the real beneficiaries. And then some others may think that as claimed by myself, as this workshop is going to be participant driven, activity based. So these are the participants who are going to be the real beneficiaries. Now the question is, who is the real beneficiary then? In order to understand this whole paradigm, in order to answer this question, let's construct a metaphor of human body. If you want to answer this question, that who is the real beneficiary of this workshop, just try and answer who or which organ in our body is the beneficiary organ. Can you name one organ that is the beneficiary organ? Is it our heart, our lungs, our kidneys, our liver, our brain, and any vital or non-vital organ? Name one organ. The function of a heart looks to be the center of the body because this is how the blood is being circulated. But at the end of the day, it's just a pump. If it is not receiving the oxygenated blood from the oxygen from the lungs and the purified blood from the kidneys and all that, if this is not being done, the heart will be supplying the wrong type of blood, not the purified, impure blood. And when the impure blood will be supplied to any organ, the organ will be dead. So the answer to this question is, the human body stays healthy and intact as long as there is a synergistic relationship between different parts of the body. The same is true for us. We are working within the same ecosystem. We are working for the same province. We are at the service of same people. You are working in colleges, we are working in universities, and PHEC, they actually hold a unique position. They are working with the universities as well as with the colleges. So they are making a common platform. They are providing us this opportunity, taking the purified blood and supplying to the different body. They are actually acting as a heart, but they are not the sole beneficiary of this system. So same goes for us. Like a human body, if we work in an ecosystem, if we can create a synergy between
our different organs of the ecosystem, we are going to be healthy, intact, and live. So this is the question. Now, the second bit is communication. We have a little video to play for this to actually enhance your commitment to this training day. Because sometimes we have this attention illusion, this false concept of multitasking, that yes, I'm hearing the resource persons and at the same time I'm signing my doc, I'm marking my scripts, I'm attending my friends, my calls, and I'm marking some paper as well. So you can't do that. So when we talk about communication, communication is not all about speaking. According to the modern research into the process of communication, we will be talking in great detail tomorrow, inshallah. The process of communication has speaking as an important component, but it only takes care of 7% of the whole process. 58% of the communication process is about listening. So if you are not listening attentively, and now how attentively you can listen, the next slide will actually make up a point over there. So 58% is listening. So if we are in a process of conversation, if we are conversating with another colleague, with a class, or we are listening to somebody like me or my team, what we are doing, and at the same time we are doing something else, this is not possible. You can do a very simple exercise right on your desk right now. If you can close your eyes and try to make a circle with your right hand and a triangle with your left hand at the same time, you cannot do it. So this is a very low order, psychomotor activity that you have to perform. If our brain cannot instruct two different hands with two different tasks, how can it process the listening and thinking at the same time? So what we have to do, we have to listen very carefully. So if we listen carefully, we actually enhance the chances of learning. So what happens? This is what happens actually. Please watch this video very carefully. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white passed the ball. So please note this down. We are going to count how many times a players wearing white they pass the ball. All right. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. All right. This is actually what happened when we are in this process, when we are doing something else. If we are focusing something else and we are pretending that we are equally listening, that is not possible. So this was the one of the thing that we want to emphasize. If you want to increase the effectiveness of your time that you have spared for this 5 days training, please reorganize all the stuff you are doing.
And when you are into the training session, this should be the only thing that you are doing. So then we have covered the question, the explanation. Now there are two expectations. So 1 plus 1 plus 2. The two expectations are very simple. One of the expectation I have already passed, and that expectation is that you please listen attentively, suspend your judgment and listen, consider everything and anything that is coming from the resource persons. This will increase actually the pool of information that you have, and then you can make your own combination and you can create your own information. So our expectation number 1, you listen very carefully. And our expectation number 2 is you are supposed to fill a survey before we start this regular training session. This survey is not the test of your knowledge. We are in no position to test your knowledge at this point of time. This survey is a diagnostic tool. We are trying to understand your needs better. If you can fill this survey and listen attentively and ask a lot of questions, there are two conditions. If you want to increase the chances of learning and retention of whatever you are going to learn, you are supposed to do two things. Number 1, listen attentively and ask a lot of questions. Please do not let us turn these sessions into monologues. Ask questions, especially at the end of every session there is a time dedicated for these questions. So if you listen attentively and ask questions, plus if you fill the survey, you need to, if you fill the survey, your chances of learning and retaining that learning, that will be enhanced. So to fill the survey, you are supposed to see, please do not click here exactly at this place. You need to find a similar icon on your own Microsoft Teams window. This is a letter sign. If you click this sign, not exactly at this place, please, somewhere over there, where I have drawn this rectangle, you need to find that sign. Once you click that sign, a survey dialog box will open, and we are going to post a survey within that particular dialog box. Just click that survey link and it will take you to the Google survey form, where there are around 10 to 12 easily understandable questions. Answer those questions. That will be a communication from your side to our side. We will be able to understand your needs and we will be trying to comply with whatever your best requirements are. And this will make these sessions very targeted and meaningful. So Dr. Amjad, can you please confirm that we have posted the survey? Yes, or Dr. Fahad? Been posted. Okay, the survey has been posted into the dialog box. Kindly click that link and this will take you to the Google survey form, where there are easily understandable questions. So once, we will be giving you around 7 to 8 minutes to do it. Once you have done it, we will be starting our training program, and this is our agenda. So, but we have a slight modification just in advance. Let us know the session number 2 by Dr. Fahad. This is going to be session number 1, and the session number 1 that will be conducted by myself, this will come later on. Dr. Fahad, over to you, please. Can you hear me, Dr. Fahad? All participants are requested to please fill this survey form, follow these directions. Please do not click exactly these places. This is just a picture. This will not help you. You need to click this similar sign somewhere over there on your screen. Maybe somewhere. Dr. Fahad, over to you, please.
आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, you are very clear, please. The second, there are various types of assessments, and the third one is how we can establish the learning process, assessment process को किस तरह से हम establish कर सकते हैं inside and outside the classroom. ये तीन चीजें जो हैं वो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे. तो सबसे पहला जो चीज है that is the taxonomies of learning domain. Taxonomy and learning domain. So there are two things. First is taxonomy and the second is learning domain. So पहले हम देखते हैं कि what is learning domain. So learning domain का मतलब ये है कि एक learner जो है उसको कितने एंगल से हम उसकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं. यानी एक बच्चा जो एक स्टूडेंट जो क्लासरूम में आ रहा है, जो एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उसको यूनिवर्सिटी टीचर जो हैं वो कितनी तरह से उसको सिखा सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं जी लर्निंग डोमेन्स. और ये तीन है, यानी उसको सोचना सिखा सकते हैं और उसका बिहेवियर जो है वो सिखा सकते हैं कि किस तरह से अच्छा रखना है और किस तरह से उसने जब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो साइकोमोटर स्किल्स जो है वो हम सिखा सकते हैं. इसको हम दोबारा देखते हैं जी ये तीनों डोमेन्स हैं क्या. ऑन दी अदर हैंड टेक्सोनॉमी से मुराद ये है कि ये स्टेप वाइज अप्रोच है, यानी स्टेप वाइज हम आहिस्ता आहिस्ता से ये ग्रूमिंग करते हैं. यानी जैसे जैसे बच्चा हायर क्लासेस की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा. इन अ नटशेल वी कैन से this is the hierarchical model in which course learning outcomes they are placed according to the level of difficulty. तो ये तीन तरह के जो डोमेन्स हैं इसको हम कहते हैं जी हेड, हार्ट एंड हैंड. तीनों की ट्रेनिंग है बेसिकली, और इसको हम कहते हैं 3H डेवलपमेंट. इसको KS से भी कहते हैं. एक शायद आपने नाम सुना हो, विलियम स्पैडी, प्रोफेसर विलियम स्पैडी. He said the purpose of education is to change three things. The first one is thoughts, change thoughts, actions and feelings. तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जिसको हम एजुकेशन कहते हैं. सबसे पहला जो स्फीयर है, जो डोमेन है, जो एंगल है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव या नॉलेज वाला डोमेन. तो कॉग्निटिव डोमेन, तो इसके अंदर क्या स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं या बच्चा क्या सीखता है. These skills they are revolve around the knowledge comprehension and skill thinking. तो intellectual skills जो हैं वो सिखाए जाते हैं कि सोचना किस तरह से, नॉलेज को किस तरह से लेना है और वाई वाले क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से करना है. साइकोमोटर इज द सेकंड डोमेन. सो साइकोमोटर दीज आर स्किल्स कि एक बच्चा जो किसी लैब में जाएगा जिसने जाके एक्सपेरिमेंट्स करने. तो लैब के एक्सपेरिमेंट्स में वो टाइम एंड स्पेस में क्योंकि काम कर रहा है, तो इसकी जजमेंट को हम कहते हैं जी साइकोमोटर स्किल्स. यानी माइंड से डायरेक्ट बॉडी का कंट्रोल जो है कि कब कोई एक कमांड देनी है, कब दूसरी कमांड देनी है और कितने टाइम के बाद और कितनी स्पेस पे देनी है. तो इसको हम कहते हैं जी साइकोमोटर स्किल्स. तो स्किल्स दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट द टूल्स. इसके अंदर क्या है, कितनी तेजी से ये कर रहा है बच्चा जो है, यानी मास्टरी स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं. टूल हैंडलिंग कितनी प्रिसीजन से कर रहा है, वो डेक्सटेरिटी से कर रहा है, दोनों हाथों को किस तरह कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा है. एजिलिटी है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोसीजर्स को समझना है और जितनी टेक्निक्स है उनको समझना है और एट द एंड पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. तो ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं ये इनको हम कहते हैं जी ये साइकोमोटर स्किल्स हैं. उसके बाद अफेक्टिव स्किल्स हैं. सो अफेक्टिव स्किल्स जो हैं वो एटीट्यूडनल स्किल्स हैं कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेता है. सो दीज स्किल्स डिस्क्राइब द मैनर इन विच द थिंग्स आर डेल्ट इमोशनली. यानी बच्चा जो है उसकी वैल्यूज क्या है, किन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो किन चीज़ों को अप्रिसिएशंस दे रहा है, मोटिवेशंस किधर से ड्राइव कर रहा है और उसकी ज़िंदगी की क्या क्या प्रायोरिटीज़ उसने रखी हुई हैं. यानी ओवरऑल उसका प्रोफेशनलिज्म जो है
वो है बेसिकली जिसको हम कहते हैं जी अफेक्टिव डोमेन। तो ये कॉग्निटिव डोमेन जो है इसको हम कहते हैं तालीम, और साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन जो है ये तरबियत है बेसिकली। तो ये दोनों काम, तालीम और तरबियत, यानी तीनों डोमेन्स जो है यही काम है जो यूनिवर्सिटियाँ करती हैं। एक बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रूमिंग जो है ये तीनों लाइंस के अंदर होगी। स्किल्स जो वो सीखेगा किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। और हमने पहले कहा कि जी टेक्सोनॉमी जो है वो स्टेप वाइज अप्रोच, यानी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो पहली जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स भी इसको हम कहते हैं। सो कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो है यानी वो स्किल्स हैं जो एक बच्चे के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे लोवेस्ट जो लेवल की ट्रेनिंग है दैट इज द रिमेम्बरेंस लेवल, इसको हम कहते हैं रिमेंबर। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसमें हम चीज़ें बच्चे को सिखा देते हैं, यानी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो एज इट इज़ उसने याद कर ली। तो फिर क्या है, इसके कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो होंगे, वो आउटकम क्या होगा कि बच्चा जो है वो चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकता है। उसके अंदर एबिलिटीज़ ये हैं कि वो डिफ़ाइन कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, एनालिस्ट कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है। जो उसने किसी बुक से देखा वो उसने याद किया और जनाब सुना दिया या लिख के दे दिया। तो ये लोएस्ट लेवल की ट्रेनिंग। और अनफॉर्चुनेटली जितना हमारा इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली इसी के ऊपर बेस करता है कि एज इट इज़ बुक, जो टेक्स्ट बुक है उसको रोट लर्निंग उसकी होती है और चीज़ें याद कर ली जाती हैं, और पेपर भी ऐसे ही होता है, असेसमेंट्स भी ऐसी होती हैं, वो दोबारा रिप्रोड्यूस कर देते हैं, दैट्स इट। तो सब कुछ फिक्स है, यानी पेपर क्वेश्चन समटाइम्स डिफरेंट आते हैं लेकिन उनके आंसर्स फिक्स हैं। तो अगर आंसर फिक्स है इसका मतलब है लाइन फिक्स है, बच्चे ने उसी लाइन के ऊपर ही जाना। तो हम उसको थिंकिंग स्किल्स नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ उसको याद करना सिखा रहे हैं। तो आजकल तो सिचुएशन ये है कि अगर बच्चे से पूछा जाए जी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो कहता है जी वंडरफुल एग्ज़ाम हुआ। अच्छा वंडरफुल हुआ है तो उसका क्या मतलब है? कहता है जी चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 5 आया था और इसका आंसर ये था, मुझे आता था। तो ये इस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं कि वो कल्चर का हिस्सा बन गया, एग्जामिनेशन कल्चर का हिस्सा बन गया, एग्जामिनेशन असेसमेंट्स का हिस्सा बन गया। और एज अ टीचर वी आर ऑल्सो बेंट अपॉन कि जनाब वही आंसर हो जो बुक के अंदर है। तो ये लोएस्ट लेवल की ट्रेनिंग है, इसको हम कहते हैं रिमेम्बरेंस लेवल। पॉइंट को आगे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड, ये है सेकंड लेवल। तो इसके अंदर क्या है, बच्चा जो जिसने कुछ याद किया अब उसको डिफाइन करने के बाद वो डिस्कस भी कर सकता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो हमें पता है कि जी F = ma है, ये सबको ये सादा तरीन फार्मूला है जी, कि जितनी इसकी इंटरप्रिटेशन वो बच्चा लिख के दे सकता है जी F = ma एंड दैट्स इट। लेकिन इसकी सादा तरीन जो डिस्क्रिप्शन वो क्या है, वो ये है कि उसको पता हो कि जितनी फोर्स हम लगा रहे होते हैं उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, F = ma। तो F का भी पता है उसको, फोर्स क्या है, मास क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो ये डिफाइन कर सकता है, कंपेयर कर सकता है दो सिचुएशंस को। तो इसको हम कहते हैं जी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक वो पहुंच के वो इंटरप्रेट चीज़ों को कर सकता है। The third level is apply level or application level. So this is the core of this taxonomy. This is the heart of this taxonomy. So इसके अंदर क्या है, जो नॉलेज उसने सीखा, यानी पहले याद किया फिर उसने अंडरस्टैंड किया, उस नॉलेज को कहीं वो अप्लाई भी कर सके किसी अननोन सिचुएशन में, किसी रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। देखिए क्लास से ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये क्या है, बेसिकली ये सिमुलेशंस की लैब है कि जो रियल लाइफ के अंदर चीज़ें आएंगी उनको हम कोर्सेज के अंदर बता देते हैं जी आपको ये प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो आपने किस तरह से सॉल्व करना, तो हम सिमुलेट कर देते हैं बेसिकली। तो हम इस तरह से सिचुएशन लेके आए कि बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सके अपना नॉलेज। तो यानी कैलकुलेशन वो कर सके,
और चीज़ों को सॉल्व कर सके। तो इसको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन लेवल की ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी। Now, the fourth level is called analysis level. तो अब ये हायर लेवल है, इसको हम कहते हैं जी एनालिसिस लेवल। तो एनालिसिस लेवल क्या है? एनालिसिस लेवल ये है कि कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है या जिसकी हम ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, उसका जो कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। तो बेसिकली उसका कैनवास बड़ा होने की वजह से उस प्रॉब्लम को हम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करें। यानी स्टूडेंट जो है उसको ये सिखाएं कि किस तरह से एक प्रॉब्लम जिसका स्कोप काफ़ी बड़ा है उसको सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। तो जब सब प्रॉब्लम्स में या जिस तरह से सब सेट्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्जन होगी तो फिर क्या होगा, अपना यानी वो जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना नॉलेज जो प्रीवियसली उसने लर्न किया है उसको अप्लाई करते हुए उसका सोल्यूशन देगा। और फिर ये देखेगा कि ये हाउ दीज ऑल दीज सबसेट्स दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, और वो ओवरऑल जो प्रॉब्लम के साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड है। तो इसको हम कहते हैं जी एनालिसिस करती है। जैसे मैं अगर ये पूछूं जी यूनिवर्सिटीज़ के क्या प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्सिटी की क्या प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के कितने पार्ट्स हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी के कोई 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं, ये जी रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये जनाब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, ये जो है वो कोई फिनांस का डिपार्टमेंट है, ये टीचिंग डिपार्टमेंट है, ये ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो सबको अलग-अलग से, इसका मतलब है वो बड़े प्रॉब्लम को स्प्लिट कर दिया गया, ब्रेकअप कर दिया गया छोटे छोटे प्रॉब्लम सेपरेट करके। हमने देखा कि जी ये डिस्टिंक्ट हैं दूसरों से, तो उधर फिर नॉलेज अप्लाई करते हुए उसका सोल्यूशन निकाला कि जी इस प्रॉब्लम, इस डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है। फिर ओवरऑल कंक्लूड करते हुए हमने बता दिया कि जनाब ये इस तरह से आपस में ये इंटरलिंक्ड है, यानी बिगर पिक्चर में इनका क्या रिलेशनशिप। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज यानी एनालिसिस, एनालाइज करना। So, to separate concepts into its parts to understand the organizational structure. और इसकी outcomes क्या होंगी? The student, they will be able to break down things, compare things, differentiate among various concepts, ideas, कुछ इस तरह से जो भी चीज़ें हैं। Now, इससे जो higher level है उसकी ट्रेनिंग जो है उसको हम कहते हैं, ये outcomes जो हैं यानी assessments में, इसको हम कहते हैं evaluate करना। सो इवैल्यूएशन जो है बेसिकली जो स्टूडेंट या लर्नर जो है इवैल्यूएशन तक पहुंचता है वो एक्सपर्ट बन चुका होता है। सो एक्सपर्ट से मुराद ये कि अपने नॉलेज का, अपने उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट है, और अब जो है उसको ये पता है कि मैं जो भी सोल्यूशन देने जा रहा हूँ वो सोल्यूशन क्यों बेहतर है दूसरे सोल्यूशन से। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जब भी कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन आएगी तो उसका एक सोल्यूशन नहीं होता, रियल लाइफ के कई सॉल्यूशंस होते हैं, कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक छोटा सा ग्लास ही अगर ले लें एग्जांपल, मेरे सामने पड़ा हुआ है। सो ये 250 ml है। अब 250 ml से मुराद, मैं अगर कहूँ जी ये ग्लास मुझे चाहिए 250 ml, एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है कि जी एक आप 250 ml का ग्लास बनाएं, तो ये हम देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी के अंदर, प्रैक्टिकलिटी में ये इसके हजारों मॉडल्स पड़े हुए हैं, और हमें पता है कि बाहर जाएं तो कितने ज्यादा मॉडल्स, हर दुकान का अपना मॉडल। इस वक्त कमरे के अंदर जितनी लाइट्स हैं वो डिफरेंट है, एसीज डिफरेंट है, टेबल्स डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम सेम सॉल्व कर रहे हैं वो, कि जी लाइट नहीं है, अच्छा लाइट नहीं है तो इसका एक लाइट लगा दें, वो जो रॉड है, फिर इधर रोप लाइट्स लगी हुई हैं, एसएमडीज लगी हुई हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, तो प्रॉब्लम वही है लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं, उसके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर वो डिपेंड करता है बेसिकली कि हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। यानी एक बच्चे को ये सिखाया जाए जब भी सॉल्यूशन देना है तो उसने क्या, किन चीज़ों को देखना है। हमें पता है रियल लाइफ के अंदर कंस्ट्रेंट्स, आइडियलाइजेशंस
अप्रोक्सीमेशंस, असम्पशंस, ये सारी डिफरेंट होती हैं। किसी एक सिचुएशन में कुछ, किसी दूसरे सिचुएशन में कुछ। एक छोटा सा अगर फॉर एग्जांपल लैंप ही लगाना है, कोई रॉड यानी पूरा घर अगर हमने बनाना है तो इधर कुछ और सिचुएशन होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएंगे तो उधर सिचुएशन और होगी। अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चरल नॉलेज है वो सेम होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ चीज़ें हैं। और रियल लाइफ जो है उसका एक आंसर कभी नहीं होता, उसके देयर आर मैनी आंसर्स। तो इस लेवल के ऊपर पेपर भी सेट किया जाए कि जिसमें ये हम देखें कि जनाब इसका एक आंसर नहीं है, इसके कई आंसर्स हैं। तो इसको हम कहते हैं जी ये इवैल्यूएशन लेवल के ऊपर। तो वो जो लर्नर है बेसिकली वो ये बताए कि जी कौन सा सलूशन मैं दे रहा हूँ और ये दूसरे सलूशन से किस तरह से बेहतर है, यानी रिकमेंड कर रहे हैं। सो इवैल्यूएटर्स जो होते हैं आमतौर पर रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं एस्टिमेशन के बाद, कुछ भी यानी आइडिया है, मटेरियल्स हैं, मेथड्स हैं, टोटल हर चीज़ जो है उसके अंदर वैल्यूएशन के अंदर आ सकती है कि जी एक मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन ले रहा हूँ वो क्यों डिफरेंट है दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन से, या क्यों बेहतर है। तो इस लेवल के ऊपर अगर असेसमेंट्स होंगी तो उसको हम कहेंगे कि जी वैल्यूएट लेवल तक हमने ट्रेनिंग करवा। लास्ट लेवल इज कॉल्ड क्रिएशन लेवल। सो क्रिएशन लेवल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें को मिला के देखा जाता है। जिस तरह एनालिसिस के अंदर बड़ी चीज़ को तोड़ के देखा जाता है, इस तरह क्रिएशन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को मिला के देखा जाता है। तो नई चीज़ को क्रिएट कर दी जाती है या पुरानी चीज़ जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। जितनी भी हमें पता है जितनी भी इनोवेशन हो रही है वो इसी लेवल के ऊपर हो रही है, क्रिएशन के ऊपर हो रही है। हर साल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ का नया मॉडल आ रहा होता है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो अपडेट होती रहती हैं, तो वो क्रिएशन की वजह से हो रही है। तो इस लेवल के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि एट दी एंड जब वो भी फील्ड में जाएंगे, जिधर भी उन्होंने जॉब करनी है, R&D में जाना है, जिधर भी जाना है उन्होंने, तो वो क्रिएशन लेवल तक ही जाएंगे। तो नई चीज़ों को बनाना या पुरानी को मॉडिफाई करना, इसको हम कहते हैं क्रिएशन। और इस लेवल ये सिखाना और फिर इसके ऊपर असेसमेंट्स करना, इसको हम कहते हैं जी क्रिएशन लेवल। प्रोग्रेशन जो है वो नीचे से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ही होगी, यानी अगर कोर्स स्टार्ट है तो फिर हम रिमेंबर से शुरू करेंगे और क्रिएशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से जाएंगे। हम दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं जी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉट्स। सो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है, जिसमें हम सिर्फ सरफेस नॉलेज चेक कर रहे हैं, सिर्फ मेमोरी जो है उसका टेस्ट है। चीज़ें जिस तरह से मैंने पहले कहा कि चीज़ें फिक्स हैं, पेपर में क्या आना है वो छाप देते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो कोई भी अब पूछ लें 14 निकात के हैं, दैट्स इट, वो उसने 14 के पूरे कर देने हैं। अब हम भी गिन रहे होते हैं 1 2 3 4 5 और 14, तो उससे क्या, वो तो किताबों में भी लिखे हैं, वो आज हमने भी कभी याद किए थे, हमें याद ही नहीं। तो याद जो है वो सरफेस नॉलेज है, दैट्स इट। हमें नहीं पता कि वो किधर से आए हैं या क्या थे। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी। तो ये इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ऑन दी अदर हैंड जो अप्लाई एप्लीकेशन से अबव हैं उनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है, जिसके अंदर हम बच्चे को लिबर्टी देते हैं सोचने की, यानी इंडिपेंडेंस की, जिसमें वो खुद से क्यूरियस है। तो ये हम सिखा रहे हैं उसको, हम उसको सोचना सिखा रहे हैं। तो डीप नॉलेज यानी अंडरस्टैंड करने के बाद वो चीज़ों को अप्लाई करे मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट है, खुद से सोच रहा है, तो वो हमें पता है एक बच्चा डिफरेंट सोचता है, दूसरा डिफरेंट सोचता है। तो हर क्लास के अंदर यह मुमकिन है कि हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पोज करें तो हर एक का आंसर डिफरेंट हो। तो ये असेसमेंट्स बेसिकली उनको भी फ्लेक्सिबल होना है कि वो सही
क्वेश्चन का आंसर देखने की बजाय ये अप्रोच देखी जाए कि ये बच्चे ने स्टार्ट किस तरह से किया है और ये किस तरह से इसकी एजम्पशन इसने किस तरह से ली हैं, अप्रॉक्सीमेशंस किस तरह से ली हैं और कौन सा लॉजिक है जिसके ऊपर बेस करते हुए इसने जनाब खुद से ये लिखा है। किताब के अंदर तो एक सिनेरियो है, तो पेपर जो है वो भी इस तरह से ओपन एंडेड होने चाहिए कि जिसका एक से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर हो, तो फिर जाके ये इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको हम कहते हैं वो आएगी कि खुद से वो देखें जी हर साल तो नॉलेज जो है वो चेंज हो जाना, तो मुझे भी अपडेट करना है अपने आप को क्योंकि नीड्स बदल रही हैं। जो आज नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिधर भी उसने जाके जॉब करनी है तो वो कल को डिफरेंट होंगी। तो अगर ये हम सिखा दें, अगर तो हम ये सिखा दें कि जनाब ये आप याद कर लें एंड दैट्स इट, तो फिर तो वो ख़त्म हो गया ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये अगर हम सिखा दें कि जनाब किस तरह से आपने क्वेश्चन को आंसर किस तरह, प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है, सोचना सिखा दें, इंडिपेंडेंस जिसमें हो उसकी, तो ये बेसिकली ओवरऑल जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी। जो दूसरी टेक्सोनॉमी है इसको हम कहते हैं, यानी दूसरा एंगल जो है सिखाने का उसको हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या है कि हम बिहेवियरल स्किल्स जो हैं वो सिखा रहे होते हैं। तो एक एस्पेक्ट है लर्निंग का कि नॉलेज से बच्चा सीख रहा है, और दूसरा है अपने बिहेवियर जो है उसका कैसा है। एक बच्चा बहुत ज़बरदस्त उसके कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन क्लास में आता नहीं है, चीज़ों को कैजुअल लेता है, लड़ता झगड़ता रहता है और यानी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट करता है, तो वो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं। तो अफेक्टिव डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम तरबियत कहते हैं। सो सबसे लोएस्ट लेवल की जो ट्रेनिंग है उसको हम कहते हैं रिसीव लेवल। तो इसके अंदर हम क्या चाह रहे होते हैं कि आउटकम्स क्या होती हैं कि कोई भी कोलैबोरेशन चल रही है अगर, क्योंकि 21st सेंचुरी जो पैडागोजिकल स्किल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से एक बंदा काम नहीं कर सकता, सारे मिल के करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं चीज़ों को। सो कोलैबोरेशन यही हम सिखाते हैं क्लासेस में भी कि 4-4 बच्चे मिल के किस तरह से काम कर रहे हैं। सो रिसीव के अंदर ये है कि अपने पीयर्स को वो सुने, जब भी कोई किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है तो अपने पीयर्स को वो सुने, या क्लास के अंदर आया है बच्चा तो वो चुप करके अपना लेक्चर जो है उसको ले। सो है ये पैसिव, यानी ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग इज पैसिव ट्रेनिंग। सो ही लिसन्स टू हिज पीयर्स और द क्लास लेक्चर जो है अपने टीचर को जो है वो अच्छे तरीके से सुन रहा है। तो इट शोज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, इसको हम कहते हैं जी रिसीव लेवल की ट्रेनिंग। नो द सेकंड वन इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड लेवल। सो रिस्पॉन्ड से मुराद ये है कि वो बच्चा जो थोड़ा सा पैसिव था अब वो एक्टिव हो चुका है, अब उसको कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो वो एक्टिवली क्वेश्चन पूछेगा टीचर से, या अपने पीयर्स में है तो एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि जी ये क्यों आप कर रहे हैं, तो या हमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो आंसर देगा। तो इसको हम कहते हैं जी रिस्पॉन्ड लेवल की ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी। तो एबिलिटी टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली, रिस्पेक्टफुली एंड एक्टिवली, इसको हम कहते हैं जी रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्स लेवल की ट्रेनिंग है। तो ये सेकंड टेक्सोनॉमी के अंदर ये सेकंड लेवल है। नाउ द थर्ड लेवल इज वैल्यू लेवल। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली द कोर। सो वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का ये मतलब है कि लर्नर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्या इम्पोर्टेंस वो किसी कॉन्सेप्ट के साथ अटैच कर रहा है। जैसे कोई कोलैबोरेशन जो है वो चल रही है तो वो अपना उसका क्या पर्सपेक्टिव है कि जी ये इस तरह कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करना है, कोई आइडिया डिफरेंट है, कोई टेक्निक डिफरेंट है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर चल रही थी, तो अपना पर्सपेक्टिव का होना, डिबेट हो गई है ना कि कौन सा बेहतर है कोर्स ऑफ एक्शन, उसके अंदर अपना आइडिया का होना, इसको हम कहते हैं जी, क्योंकि वो अपने आइडिया को वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू लेवल तक ट्रेनिंग होगी। इसको हम दूसरी तरह इस तरह से देख सकते हैं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाए कि जैसे हम कहते हैं जी 4 बंदों में बैठ के, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है,
तो ये ठीक है और यही वैलिड है क्योंकि ये मेरा है, लिहाजा जब यही ठीक है तो बाकी सारों का गलत है। तो ये चीज़ जो है ये ना हो, बल्कि ये हो कि मेरा भी पर्सपेक्टिव ठीक है एंड यू गॉट द पॉइंट एज वेल। आपका जो पॉइंट था वो भी बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक जिस तरह से सिचुएशन होती है उसमें मेरा पॉइंट भी है, ये आपका पॉइंट भी है। सो शेयर्स वंस ओन पर्सपेक्टिव while respecting the diverse opinion of the group। इसको हम कहते हैं ये वैल्यू दे रहे हैं, यानी किस तरह से पॉजिटिवली कन्फ्रंट करना है ये सिखाया जाए। तो ये आमतौर पे कोलैबोरेशन कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हम ये उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि जी अपना अपना पर्सपेक्टिव इसके ऊपर लिख दें कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है, कौन सा आइडियल बेहतर है, या वैल्यू किस चीज़ को हम दे रहे हैं। बच्चा कहता है जी मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि टाइम कीपिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। या जब भी मैं लैब में जाऊँगा मैं ओवरकोट पहन के जाऊँगा, तो वो अपने इस आइडिया को वैल्यू दे रहा है। या जब भी मैं जाता हूँ मैं जाके तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ता हूँ, या मैं टाइम के ऊपर क्लास में जाता हूँ, टाइम पे जो है वो क्लास से निकलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, या बाकी ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं उनको मैं किस तरह से पूरी जितनी वैल्यू है वो उतनी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस उतनी अटैच कर। तो इसको हम कहते हैं जी ये थर्ड लेवल की जो है वो ट्रेनिंग। नाउ द फोर्थ लेवल इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो लीडरशिप लेवल है, जिसके अंदर वो जो डाइवर्स ओपिनियन की बात हो रही थी, वो हमें पता है कि डाइवर्स ओपिनियन में सारे ठीक नहीं होते, या 100% सारे आर्ग्यूमेंट्स एक ही लेवल के नहीं होते। कुछ हायर लेवल के हैं, कुछ लो, कुछ उससे लो, कुछ यानी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। सो ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। तो लीडर जो है वो क्या करता है कि सबकी सुनने के बाद रीसिंथेसाइज करता है कॉन्सेप्ट को और फिर वो पेश करता है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन लेवल है कि किस तरह से डाइवर्स ओपिनियन को इकट्ठा करके एक बना दिया जाए। तो ये ऐसे ही है कि हम क्लास के अंदर कोलैबोरेशन वर्क में सबसे पूछ भी लें और उसके बाद हम कहेंगे जी एक कंक्लूजन आपने देना है, तो इसको कंक्लूड भी करें। तो जब वो कंक्लूड करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो प्रायोरिटाइज उन्हें करना पड़ेगा। तो ये हम इस तरह से उनकी ये भी एक एग्जांपल है जिसमें ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। नाउ द लास्ट लेवल इज इंटरनलाइज लेवल। तो इंटरनलाइज लेवल क्या है? इंटरनलाइज लेवल ये है कि जो उसने सीखा था वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, यानी उसका कंडक्ट है जो सामने आगे डिस्प्ले है, वो सारे का सारा जो वैल्यू सिस्टम से नीचे सीख के आया है अब उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है, यानी उसका जो है वो प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा बन चुका है। इसको हम कहते हैं जी इंटरनलाइज हो गया, करेक्टराइज हो गया हुआ। और यही बेसिकली करेक्टर ही नज़र आ रहा होता है जिधर भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ये फलां यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बच्चा है तो अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त होगा, बात अच्छे तरीके से सुनता होगा, बोलते वक्त इस तरह से कंक्लूड करता होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनलाइज है या करेक्टराइज। इनको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लो लेवल की ट्रेनिंग है, मीडियम और हाई लेवल जो इंटरनलाइज। और द थर्ड एंगल या थर्ड डोमेन जिस पे हम चीज़ों को बच्चे को सिखा सकते हैं वो है कि बॉडी और माइंड का जो आपस में लिंक है, कि माइंड जो है वो बॉडी को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, यानी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें डायरेक्ट। जैसे हम गाड़ी चला रहे हो तो खुद से ही चीज़ें रिफ्लेक्सेस के थ्रू चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं कि कब ब्रेक मारनी है और कब स्टार्ट करना है और कब आगे इशारा आगे तो रुकना है, स्पीड कम करनी है और गियर चेंज किस तरह से करना है। इसी तरह से लैब के अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज़ करना है, कितनी यानी कमांड्स कब कौन सी देनी है, तो स्पीड कितनी से देनी है, यानी स्पेस एंड टाइम के अंदर जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल की जो ट्रेनिंग है इसको हम कहते हैं इमिटेशन लेवल। सो इमिटेशन लेवल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है कि किसी लैब के अंदर मैं अगर गया हूँ एज अ टीचर तो मैंने एक्सपेरिमेंट एक अच्छा ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था
और ये मैंने परफॉर्म कर दिया और स्टूडेंट ने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। सो कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स है, पहले से गेम फिक्स है। मैंने क्या करना है, स्टूडेंट ने क्या करना है और उसका आउटकम क्या आना है, सब कुछ फिक्स है। इसको हम कहते हैं इमिटेशन लेवल। सो कॉपी पेस्ट हो रहा है, जैसे किसी चीज़ को हम सिखा रहे हो जनाब फॉलो करना या रिपीट करना, तो जिससे यही आएगी उसके अंदर एबिलिटी, फॉलो करने की, रिपीट करने। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं इमिटेशन। उसके बाद मैनिपुलेशन है। सो मैनिपुलेशन के अंदर क्या है कि वो जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, तो उसने जो पहले से सीखा हुआ था नॉलेज, अब विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देता है, यानी ऑनलाइन है अगर, तो उधर से एसओपी डाउनलोड करके या जो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है उसको देखते हुए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देता है। इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। So the third level is precision level, and this is the core of this taxonomy. So precision level है basically independence, जिसमें आ गया student centered learning, जिसकी बात हम करेंगे कि जी ये सारे का सारा क्या है, student centered learning। तो student centered learning precision है basically। तो इसको हम कहते हैं जी independent और effortless, काम खुद से बच्चा जो है वो इस काबिल हो गया कि वो कर रहे हैं। जैसे अगर उसने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर चलानी है, तो पहले दिन मैं उसको बताऊं जी ये किस तरह से आपने करना है, और वो खुद से मुझको देखते हुए एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट कर दे। फिर दूसरे दिन या अगले दिन वो देखे जी मैनुअल से कुछ चीज़ें करके देख के कर ले, और मास्टरी का ये लेवल आ जाए कि अब उसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, खुद से जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो ये प्रिसीजन लेवल तक वो पहुंच चुका। सो इंडिपेंडेंट जो कंट्रोल है ओवर द मशीन, उसको हम कहेंगे कि प्रिसीजन लेवल। नाउ द फोर्थ लेवल इज आर्टिकुलेशन लेवल। सो आर्टिकुलेशन लेवल ये है कि कोई नई चीज़ आ गई जो उसने सीखी थी उससे हट के कोई नई चीज़ आ गई, जिससे उससे वो जो स्किल था उसको उसने अपडेट करना था। कोई अनकन्वेंशनल सैंपल आ गया, यानी एससीएम के अंदर कोई अनकन्वेंशनल सैंपल आ गया, उसको प्रिपेयर करना। वो जब करेगा तो इसको हम कहेंगे जी वो खुद से कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो ये आर्टिकुलेशन है बेसिकली। एबिलिटी, इट शोज द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मॉडिफाई स्किल्स टू फिट न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर वो कोऑर्डिनेशन सीख रहा है, अच्छा नई चीज़ें हैं तो क्या क्या करनी है। तो और बाकी जो प्रिसीजन के अंदर वही चीज़ें हैं जो प्रिसीजन वाली। Now the last level is naturalized level. So naturalized से मुराद ये है कि वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए, और मास्टरी का जो लेवल है उसके अंदर इंट्यूटिवली चीज़ें वो कर रहा है, विदाउट थिंकिंग, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो आपसे आप हो रही हैं। जैसे हमें गाड़ी चला रहे हो, चले गाड़ी की एग्जाम्पल है, गाड़ी चला रहे हो तो साथ में समटाइम्स जो है वो बातें भी हम कर रहे होते हैं, सारा जेन जो है वो बातों की तरफ होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो हम गियर भी चेंज कर सकते हैं, हम ब्रेक्स भी लग रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ। इसको हम कहते हैं जी ये हाईएस्ट लेवल की जो है नेचुरलाइज तक। या कोई मशीन का ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज़ है जो कि नई बच्चों ने लगानी है या लर्नर ने सीख के तो वो नया एलिमेंट लगाना है, उसको भी हम कहते हैं कि जी ये मशीन के ऊपर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इनको ये पता है कि इधर क्या चीज़ लगनी है, तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं नए एलिमेंट। तो ये बेसिकली तीनों डोमेन्स हैं जिसके अंदर हम एक लर्नर को सिखा सकते हैं, से उनकी डेवलपमेंट या ग्रूमिंग जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्टेप वाइज जो डोमेन है उसमें लो, मीडियम और हाई, ये पिरामिड है, लर्निंग पिरामिड जिसको हम कहते हैं। वही तीन चीज़ें जो हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन जिसको हम कहते हैं। आमतौर पे ये जो सर्कल का इनर है, इधर चाहिए हमें कि हम असेसमेंट्स जो है वो डिज़ाइन करें। इससे नीचे नीचे स्टूडेंट की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो कम है, पैसिव पार्टिसिपेशन है, और लर्निंग उस लेवल पे नहीं है जिस पे इंडिपेंडेंस आ जाए, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसका कम एलिमेंट है, इससे अबाव ही होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन जो है वो क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन ये है कि कोई भी बच्चा तब तक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक कि
वो रिमेंबर ना कर सके, या तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकता अपना नॉलेज तब जब तक कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ना कर सके। तो ये ओवरऑल है कि निचले वाला लेवल आएगा, जिस तरह हम सीढ़ियों पे आस्ता आस्ता चढ़ते हैं, पहले सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी, नीचे लेवल आएगा तो फिर आस्ता आस्ता वो ऊपर जाएगा। यानी तब तक वैल्यूएशन नहीं हो सकती जब तक कि चीज़ों को एनालाइज ना कर लिया जाए, और इसी तरह से क्रिएशन नहीं हो सकती जब तक कि वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है उसमें से ना गुजारा जाए। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निशन। सब्जेक्ट्स और लर्निंग लेवल जो है वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है। तो सब्जेक्ट्स में जिस तरह से स्टार्ट में कोई सब्जेक्ट है तो जाहिर बात है इंट्रोडक्टरी कोर्सेज हैं, इंट्रोडक्टरी में व्हाट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो रिमेंबर या अंडरस्टैंड वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी इधर रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई मैक्सिमम एप्लीकेशन तक, क्योंकि फाउंडेशनल नॉलेज है, टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि चीज़ें बच्चा सीख जाए, उसके पास वो जो जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस आ जाए, तो ये ज़्यादा वो है। अच्छा, जैसे जैसे एडवांस कोर्सेज की तरफ जाएंगे, एडवांस जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली उनके अंदर जो असेसमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन लेवल से अबव होने चाहिए, यानी बच्चे इंडिपेंडेंस आए उनमें। सो एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, वैल्यूएशन और क्रिएशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और अभी जो है उससे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट, नहीं। सो थिंकिंग स्किल्स जो है वो उसको आने चाहिए, एप्लीकेशन, एनालिसिस, वैल्यूएशन, क्रिएशन। Now, moving towards constructive alignments of various elements. 3 elements, they are very important. So first element is course learning outcomes, जिसको अभी हम कह रहे थे कि skills हैं, तीनों domains के अंदर जो skills है, skill का level है, तो इसको हम कहते हैं course learning outcomes, कि इस कोर्स से बच्चों के अंदर क्या क्या एबिलिटीज आई हैं, क्या क्या स्किल्स आए हैं, और फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, और फिर असेसमेंट्स। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और ये जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन इनकी होगी तो फिर कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट होगी जिसमें बच्चे सीखेंगे। कोर्स लर्निंग आउटकम्स और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो ये इन लाइन विद ईच अदर। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यानी पढ़ाने का हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, सो इंस्ट्रक्शंस हमारी और असेसमेंट्स, और इसी तरह से कोर्स लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट्स अगर ये हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर सेटिस्फेक्शन भी आएगी और लर्निंग भी ऑप्टिमम होगी और ग्रेड्स भी उनके बेहतर आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मिस अलाइनमेंट हो गई है जी। यानी कोर्स लर्निंग आउटकम्स ये थे कि मैं बच्चों को एनालिसिस कराऊंगा, ये मेरे कोर्स का मैंडेट ये था कि जी बच्चे जो है वो एनालिसिस सीख जाएंगे। नो, एनालिसिस से मुराद क्या हुई कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बेसिक्स रखी, बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताया उनको कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, लेकिन जो कोर्स आउटकम्स थे वो मेरे एनालिसिस के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैंडेट पूरा ही नहीं कर सका, पढ़ाने का तरीका ही मेरा ठीक नहीं है, तो मुझे तो एनालिसिस मैक्सिमम लेके जाना था बच्चों को, लेकिन मैं नहीं लेके गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मेरी ये थी कि मैं थ्योरी पढ़ाता गया, ठीक है, और एट दी एंड जब असेसमेंट का टाइम आया तो मैंने प्रॉब्लम सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिए, तो फिर भी मसला आएगा। फिर कोर्स लर्निंग आउटकम्स ये थे कि जी मैंने एवेल्यूएशन जो है वो मैंडेट मेरा ये कि एवेल्यूएशन मैंने सिखानी है बच्चों को, यानी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू एवेल्यूएट सच एंड सच कॉन्सेप्ट्स। लेकिन जब असेसमेंट का आया टाइम तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट पूछ लिया। या इसके उल्टा है कि कोर्स लर्निंग आउटकम मेरे ये थे कि मैं इंट्रोडक्टरी कोर्सेज है तो सिर्फ ये पूछ लूँ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, लेकिन जब असेसमेंट की बारी आई तो मैंने जो है वो असेसमेंट्स में इवैल्यूएशन की तरफ में चला गया। तो ये फिर क्या होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी और इनएफिशिएंट लर्निंग होगी और ग्रेड्स भी बच्चों के लो आएंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द असेसमेंट्स एंड वैल्यूएशन। तो असेसमेंट्स क्या है, यही तीनों जो डोमेन्स हैं इनके अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं, मींस ऑफ मेजरिंग नॉलेज कितना है उसका, स्किल कितना, और फीलिंग्स यानी एटीट्यूडनल स्किल्स उनके पास कितने हैं।
यानी हम कह रहे हैं कि जी मैथ्स के अंदर पेपर लिया तो बच्चे के 70 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स, तो ये असेसमेंट है उनकी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इवैल्यूएशन क्या है कि हम उनकी परफॉर्मेंस नोट करें। इट्स अ प्रोसीजर फॉर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस के बच्चे ने क्लास के अंदर कैसा परफॉर्म किया। तो 70% है तो हो सकता है मैथ्स के अंदर ये लोएस्ट हो, लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग हो। तो इसलिए हम एवेल्युएशन की तरफ जाते हैं कि जी इसका अगर हमें पता है अच्छा ए ग्रेड है तो या बी है, इसका मतलब है ए ग्रेड है तो ये टॉप पे है, बी है तो मिडल पे है, सी है तो ये लोअर ग्रुप में चला गया, और डी है तो बिल्कुल एज पे है पास, और एफ है तो इसका मतलब है फेल हो चुका। और इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव भी हैं। सो इवैल्यूएशन जो है बेसिकली वो ग्रेडेड है, वो शॉर्ट फॉल वो बताएगी हमें प्रोडक्ट आपका कैसा है। ऑन दी अदर हैंड असेसमेंट जो है वो ये बताएगी कि बच्चे जो है वो कितने, यानी फीडबैक देगी कि हम पढ़ा ठीक रहे हैं या नहीं ठीक रहे। तो असेसमेंट्स की तरफ चलते हैं कि ये असेसमेंट्स जो है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, उनमें से कुछ हमने इधर डिस्कस करने के लिए रखी है लेकिन सब के अंदर ये है कि असेसमेंट का जो मेन फोकस है वो यही है कि फीडबैक के लिए यूज होता है। तो फीडबैक जो है उसके लिए इसने यूज होना है। तो असेसमेंट जो है सबसे पहली टाइप के असेसमेंट इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, जिसके अंदर हम पहले से ही हमें पता होगा ये कोड कैसा है ताकि हम अपने टीचिंग जो स्ट्रेटजी है उसको ज़रा चेंज कर लें। पहले दिन हम आए हैं, कोई क्विज ले लिया, कोई छोटा सा पेपर ले लिया, कुछ वैसे ही क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लिया, जिससे ये पता चल गया ये बच्चे किधर खड़े हैं, कि मुझे कितना इनको टाइम देना चाहिए, या किस टॉपिक में ये बड़े स्ट्रांग हैं और किस टॉपिक में ये स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो डायग्नोस्टिक्स जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए हम एक टेस्ट लेके तो फिर अपना कोर्स जो प्लान है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फीडबैक उधर यूज हो। फिर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स जो है यही बेसिकली असेसमेंट्स है जो आमतौर पे हम कर रहे होते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट से मुराद ये कि जो साथ साथ चलती जाती हैं, ऐसा नहीं है जो मतलब कि एक ही हमने एग्ज़ाम लेना, नहीं, हमने कोई असेसमेंट ली, असेसमेंट लेने के बाद हमें पता चला यार बच्चे इसमें जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, या मैंने जब पढ़ा दिया टीचिंग क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे पता चला कि जी ये बच्चे अच्छे इसमें उनकी लर्निंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है मुझे अलहदा से कोई इनको असाइनमेंट्स देनी है या होमवर्क देना है या कोई ट्यूटोरियल्स मैंने लेने हैं, कोई एक्स्ट्रा को मैंने जो है वो क्लासेस इनके लेनी है। तो वो किधर से आएगी, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से आएगी। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, हम जो कुछ पढ़ा रहे होते हैं टीचिंग लर्निंग वो प्रोसेस खत्म हो गया, अब हम असेसमेंट्स करेंगे तो उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। जैसे आमतौर पे मिड या फाइनल टर्म के एग्जाम होते हैं तो ये समेटिव असेसमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल हम ले बड़ी सादा से ले सकते हैं कि जी खाना अगर पक रहा है और उस वक्त पकने के दौरान अगर पूछा जाए जी कैसा पका है, तो हम बता सकते हैं कि जी इसमें स्पाइसेस हैं कम है, या पानी कम है, या भी थोड़ा सा कच्चा है। तो फिर क्या होगा, वो उसी वक्त जो है वो फीडबैक जाएगा और नमक भी डाल जाएगा, स्पाइसेस भी डाल जाएंगी, पानी भी डाल जाएगा, या स्टोव जो है उसका वो हम हाई कर देंगे ज़्यादा ताकि गल जाए, कच्चा है अगर। ऑन दी अदर हैंड समेटिव असेसमेंट जो है वो किस तरह की है कि खाना पक के हमारे पास आ गया, तो अब हमें कहा जाए कि जी कैसा है, तो अब जो भी हमने असेसमेंट्स यानी उसके अंदर चेंज करनी है, जो फीडबैक आना है वो अगले दफ़ा के लिए आना है कि ये बिरयानी इस वक्त तो पक गई है, जब अगली दफ़ा आएगी तो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो ये समेटिव असेसमेंट भी बिल्कुल ऐसी है कि एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग हम देखते हैं, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो साथ साथ हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपना प्लान। सारा देखते हैं। सो कन्फर्मेटिव असेसमेंट्स क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ समेटिव असेसमेंट ही है। जैसे एंट्री टेस्ट है, पहले उससे पहले समेटिव असेसमेंट्स हो चुकी होती हैं लेकिन फिर भी टेस्ट लिए जाते हैं, या कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स जो हैं वो कन्फर्मेटिव असेसमेंट्स हैं कि पहले 5 या 8 सब्जेक्ट्स क्लियर किए, उसके बाद सबको मिला के फिर एक किया, तो ये इसको हम कहते हैं कन्फर्मेटिव असेसमेंट्स। फिर नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट्स हैं।
सो क्राइटेरियन रेफरेंस के अंदर कोई क्राइटेरिया बना दिया गया, जैसे 3.5 हम कह दें कि जी CGPA जिसका आएगा उसको हमने सर्टिफिकेट देना है। नॉर्म रेफरेंस में है कि जी पहले 5 बंदों को हमने देना है। तो पहले 5 बंदे हो सकता है मतलब उनमें से कई बच्चे फेल हो गए हों, या फेल तो नहीं कहना चाहिए, यानी कम लो परफॉर्मिंग हो। सो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म रेफरेंस के अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ कंपेयर हम करते हैं, पूरी क्लास को देखते हैं, वो जो कोर्ट है पूरे ग्रुप को। लेकिन क्राइटेरियन के अंदर हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया और उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेते हैं। तो जो 3.5 हो सकता है पूरी क्लास इससे कम हो, किसी को भी ना सर्टिफिकेट मिले, लेकिन नॉर्म रेफरेंस में 5 बच्चों को मिलना ही मिलना चाहे जो मर्जी हो। जिस तरह से हम एक मार्क्स रख देते हैं जिससे ऊपर वाले फेल है, इससे नीचे वाले पास है, या हम नॉर्म रेफरेंस में कह देते हैं जी पहले बच्चे को हमने जो है वो गोल्ड मेडल देना है, पहले बच्चे को कहना है उसकी जो भी असेसमेंट हुई है वो हमने नहीं देखनी। हो सकता है अगली दफ़ा कुछ और, वो सालों में अगर कंपेयर करें तो दोनों में एक बच्चे के ज़्यादा हो दूसरे के कम हो, लेकिन दोनों गोल्ड मेडलिस्ट। इसका मतलब है उसने अपने कोड में कैसा परफॉर्म किया। रिपसेटिव असेसमेंट जो है लास्टली वो ये है कि बच्चे की परफॉर्मेंस उसकी अपने साथ ही कंपेयर की जाए। जैसे एक एथलीट अपने साथ ही कंपेयर करता है कि जो पहली दफ़ा भागा 100 मीटर रेस में तो वो 15 सेकंड में हुई, फिर 14.5 में हुई, इस तरह से 14 में हो गई। तो ये बेसिकली अपने हिसाब से ही वो हम देखते हैं, यानी बच्चा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ ही कंपेयर करता है। तो ये असेसमेंट्स की टाइप से आप चलते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स की तरफ। तो समेटिव असेसमेंट जो है वो 5 तरह की हो सकती हैं। दिस वेरी पॉपुलर, ये हमें पता है। रिटन में हमें पता है कि जी एग्जामिनेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम शीट्स हम दे देते हैं, ऐसे राइटिंग है जिसपे बच्चों ने लिख के देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिटन में। स्टूडेंट नेगोशिएशन में ये है कि जी हम जब असेसमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो पॉलिसी का हिस्सा होता है बच्चा, जिसमें वो बता रहा होता है कि जी मैंने इतनी मेरी काइंडली असेसमेंट्स आपने करनी है। यानी जिस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में हमें पता है कि हम कह देते हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो स्टूडेंट कहता है सर 4 की बजाय 3 कर दें, या 4 की बजाय 5 कर दें, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ इसमें। ये स्टूडेंट नेगोशिएटेड। डिज़ाइन जो है वो डिस्कोर्स तब होता है जब एट द एंड सिर्फ डिज़ाइन में मिलना होता है। ये ड्राइंग है, कोई स्ट्रक्चर है, इंटीरियर डिज़ाइन है, कंप्यूटर मॉडल है, इस तरह से। और ओरल में हमें पता है हम प्रेजेंटेशन या वाइवा वगैरह हम ले सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें हमें पता चले। इसी तरह से परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड जो है वो लैब्स के अंदर जो है क्रिएटिव कोई वर्क है, कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। तो ये सारी की सारी जो है जो असेसमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट्स, और ये साथ साथ जो है वो चलती जाएंगी। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, ये 3 तरह की आमतौर पे ऑनलाइन, इन क्लास एंड आउट ऑफ द क्लास हो सकती हैं। क्लास हमें पता है छोटे क्विज हम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम शीट्स, कोई MCQs, इस तरह से 1 मिनट टेस्ट वगैरह साथ साथ जो चलनी है, और उससे हमें पता चल जाए कि जी कैसा हम पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद आउट ऑफ द क्लास जो है ग्रुप रिसर्च एक्टिविटी कोई हमने दे दी है जो कि बच्चे खुद से कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट आ रहा है, फिर सेकंड ड्राफ्ट आ रहा है, थर्ड ड्राफ्ट आ रहा है, ये सारी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर ऑनलाइन जैसे आजकल MCQs वगैरह या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज हम दे देते हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं। इनको देखने का एक और तरीका है, उसको हम कहते हैं जी असेसमेंट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में भी हम देख सकते हैं। सो डायरेक्ट असेसमेंट जो है जो कि फैक्ट की बेस के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि फैक्चुअल बच्चे को कितना नॉलेज की बेस के ऊपर, तो वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट असेसमेंट। जैसे इसकी 2 अप्रोचेज हो सकती हैं, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। सो टीचर सेंटर्ड अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें टीचर जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और लर्निंग जो स्टूडेंट की जो है उसको ड्राइव टीचर कर रहा है। तो एग्जामिनेशन या रिटन प्रैक्टिकल को क्विज वगैरह वाइवा ये सारे जो है वो टीचर सेंटर्ड है। ऑन दी अदर हैंड जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी रूह जो है वो ये है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए चीज़ें, यानी असाइनमेंट्स जो है अभी हम देखेंगे कि जी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं क्रेडिट आवर सिस्टम। सो क्रेडिट आवर्स जो है जिस तरह पुराने सिस्टम के अंदर क्या है, ओल्ड सिस्टम में ईयर सिस्टम में हम सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं कि जी कितने सब्जेक्ट्स ने पढ़ लिए।
लेकिन इस सिस्टम में हम क्रेडिट आवर्स जो है वो देखते हैं। और थ्योरी का क्रेडिट आम तौर पे ये है कि एक क्रेडिट आवर के लिए कम से कम 3 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चे की, चाहे वो इन द क्लास हो चाहे आउट ऑफ द क्लास हो। तो थ्योरी के अंदर हम कहते हैं कि 3 क्रेडिट आवर बच्चा अर्न कर जाएगा जब वो 3 घंटे की क्लास लेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि 1 घंटे का मतलब है 3 घंटे की ट्रेनिंग, तब 1 क्रेडिट आवर अर्न करेगा। तो इसका मतलब है अगर 3 घंटे उसने क्लास में लगाए तो बाकी 6 किधर गए, यानी 3 × 3 × 3 9 बनने चाहिए, लेकिन हम उसको 3 उसने अर्न कर लिया, बाकी किधर गए। बाकी बेसिकली ये है कि 6 आवर्स हमने उसको काम देना है घर के लिए, कि घर से वो करके आए, यानी असाइनमेंट्स देनी है, होमवर्क देना है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो लर्निंग सीट के ऊपर बैठ जाए, वो खुद से डिस्कवरी परसूट करे और चीज़ों को रिसर्च करते हुए लेके आए, चीज़ों को देखे कि किस तरह से चलनी है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और इसमें लैब जो है वो भी ओपन एंडेड हो जाएंगी, फिर खुद से स्टूडेंट जो है वो लैब का डिज़ाइन भी खुद से करें। फिर क्या है कि जी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ही बेसिकली समझ लें कि सेंट्रल पॉइंट है इस पूरे सिस्टम का। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशन होगी और फिर देखा जाएगा कि पास फेल कौन सा हमने कितना KPI कितना रखा हुआ है, यानी जो है वो 35 रखा है 40 रखा है, तब बताएंगे जी बच्चे पास आए या कितने फेल। डायरेक्ट असेसमेंट्स क्या है, जो परसेप्शन की बेस पे हो रही है। सो परसेप्शन की बेस के ऊपर ये चल रही है, जैसे वो फैक्ट्स की बेस पे थी, ये परसेप्शन की बेस पे है। इनकी बेसिस क्या है, परसेप्शन है। तो परसेप्शन हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है, हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए ये लिकट स्केल के ऊपर होती है कि आप अग्री कर रहे हैं या नहीं। मैं एक बच्चे से पूछूं जी आपको ये जो है वो टॉपिक कितना आपकी कमांड है, 20% आता है 30% जी, या मैं क्वेश्चन इस तरह से करूं कि जी आप अग्री करते हैं कि आपको इतना आता है या आप डिसअग्री करते हैं या कोई मिडल में है, न्यूट्रल है, क्या है। तो जब भी हमने फीडबैक लेनी है या एक बच्चे को हमने इंटर्नशिप के लिए भेज दिया, अब एम्प्लॉयर से हमने पूछना है, तो एम्प्लॉयर ये तो नहीं कह सकता कि जी वो तो स्केल के ऊपर देखेगा कि जी बच्चा कैसा था, तो वो भी उसकी परसेप्शन हो सकता है, एक एम्प्लॉयर कुछ कहे दूसरा कुछ कहे। तो ये इनडायरेक्ट असेसमेंट इस तरह की, इसकी भी इवैल्यूएशन के बाद उस तरह से हम देखते हैं कि जी KPIs जो है बने। अब समटाइम्स इस तरह से होता है कि चीज़ें बड़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होती हैं। सो जब क्वालिटेटिव होती हैं तो वो एक पेज पे नहीं आ सकती, सो उसके लिए फिर रूब्रिक्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। मेरी एक जब मैं PhD करने के लिए गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो MSc को हम पढ़ा रहे थे, तो सर ने जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कुछ पेपर कुछ असाइनमेंट्स थी कि जी ये मार्क करके लाए। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके मार्क करके गया, तो उन्होंने कहा कि जी बात सुने मेरी कि आपने किस तरह से इस बच्चे को 60 मार्क्स दे दिए, इसको 70 दे दिए, ये तो लगता है कि आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं मार्क्स। तो मैंने कहा कि जी मैं तो बड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई क्राइटेरिया इसका बनाओ। तो फिर मैंने रूब्रिक्स बना के तो फिर असेसमेंट्स की, यानी क्या है कि कोई भी अगर प्रेजेंटेशन चल रही है तो अगर 3 से 4 बंदे बैठे हुए हैं जजेस जो है, तो हर बंदे ने कहना है जी ये बेहतर है या ये ठीक नहीं था, हर एक की डिफरेंट होगी। तो इन सबको एक पेज पे लाने के लिए रूब्रिक्स बनाने पड़ते हैं। सो गाइडलाइंस जो हैं वो आएंगी, इसको हम कहते हैं दो चीज़, एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और फिर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमने चेक करनी। ये सबसे पहले हमने ये देख लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन है तो मैंने 3 चीज़ें इसकी प्रेजेंटेशन में देखनी है कि इसकी ओवरऑल इसने जो स्लाइड्स कितनी बनाई और कितना टाइम लिया, इसकी मैकेनिक्स कितनी थी और इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज कितना था, इसने क्वेश्चन को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो ये सारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये हमें पता है कि हर बच्चे का डिफरेंट होगा। फिर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हम देखेंगे जी, अगर मैंने क्वेश्चन 3 पूछे थे आउटस्टैंडिंग आया या अनसेटिस्फैक्ट्री उन्होंने जवाब दी, तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी फिर परफॉर्मेंस का लेवल देखा जाएगा। तो जैसे एक मैट्रिक्स बनेगा, इधर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और इधर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि जी ये अगर आएगा तो 1 है इसका, ये 2 है, ये 3। जैसे कंट्रीब्यूशन टू द टीम वर्क या प्रोजेक्ट के अंदर एक बच्चे ने कितनी कंट्रीब्यूशन की, तो इफ ही डजंट कलेक्ट एनीथिंग, कलेक्ट इंफॉर्मेशन,
बट यानी स्पेरिंगली उसने की तो 2 मार्क्स है, और अगर कोई यूजफुल आइडियाज भी थे उसमें इंफॉर्मेशन के बाद 3 है, और अगर बड़ा ही ज़बरदस्त था तो वो 4 मार्क्स थे जी, 4 में से। और इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई हम ले रहे हैं कि जी ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसमें या नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें से उसके 3 मार्क्स थे और इसमें से उसके 2 मार्क्स थे, तो ये 5 आ गए, तो 5 आउट ऑफ 8। तो ये असेसमेंट्स ही हैं, ये वैल्यूएशन ही है, अभी ग्रेड नहीं हुआ, ग्रेड इसका भी लगना है, पूरी क्लास में हमने कंपेयर करना, तो इसलिए ये असेसमेंट्स ही हैं। तो रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट जो है ये बड़ा पावरफुल टूल है और यही हमें यूज़ करना चाहिए। जब वो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा था, तो जब रूब्रिक्स बन गए तो वो काम जो मैंने 5 घंटों में किया था वो 2 घंटों में हो गया था। बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक वो सामने आ गया, एक टच स्टोन के किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चला। फिर क्या है, ओवरऑल जो क्लास की क्वालिटी उसको समझने के लिए 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए कि हम ये असेसमेंट कर क्यों रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं, और किस तरह से असेस कर रहे हैं। तो ये तीनों अगर हमारे पास आंसर्स होंगे तो क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद ये है कि हमने कम्युनिकेट किस तरह से करना है अपनी असेसमेंट्स जो हैं वो बना के, या कोर्स लर्निंग आउटकम्स को। और फिर स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि स्टूडेंट को किस तरह से जो है वो इन्वॉल्व हमें करना है। अंडरस्टैंड आउटकम जो है वो स्टूडेंट को आने चाहिए ना। फिर ओवरऑल असेसमेंट जो है इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं जी, पेपर से पहले, एग्जाम से पहले, फिर ड्यूरिंग द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम। तो पेपर से पहले तो ये है कि हमने एक पास फेल क्राइटेरिया और इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने बनानी है, और ड्यूरिंग द एग्जाम जो है वो पेपर को किस तरह से हमने फैसिलिटेट करना है, या असेसमेंट जो है वो फैसिलिटेशन जिसके अंदर है वो किस तरह से हमने करना है। और आफ्टर दैट के कोई अगर जो रिजल्ट्स आएंगे उससे फिर हम एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, हम किस तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस हैं जो कि असेसमेंट्स इस तरह से हम ले सकते हैं कि जो बच्चे हैं बेसिकली वो जो लोअर ऑर्डर हम कह रहे थे कि जी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम नहीं जा रहे, हम हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस आ रही है, क्यूरियस माइंड आ रहा है। टीचर ये ना सिर्फ सिखाए कि किस तरह से चीज़ें याद करनी है, रोट लर्निंग नहीं है इसमें थिंकिंग हमने सिखानी है बच्चों को कि सोचने का क्या तरीका है, एनालिसिस किस तरह से करना है, डीप जो रिफ्लेक्शन किस तरह से आनी है बच्चों के, इंडिपेंडेंस किस तरह से आनी है। तो ये बेसिकली हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो साथ में डाल सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन उससे मांग ले। तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो टीचर है वो एग्ज़ाम इस तरह का ओपन एंडेड हम बनाए जिसका एक आंसर ना हो, जिसमें के मोर देन वन आंसर हो, चूंकि रियल लाइफ हो। और उसमें हम ये भी ना देखें कि जनाब ये बच्चे जो हैं वो वही आंसर आया जो बुक के अंदर था, तो फिर तो वो रोट लर्निंग है, वो लोअर लेवल की चीज़ें वो तो भूल जानी है। क्या चीज़ें याद रखती हैं जिसमें हायर लेवल है, डीप अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। तो इसमें हम क्वेश्चन वही अगर रहे हैं तो उसमें हम अगर पूछ लें क्लैरिफिकेशन से कि जी कुड यू एक्सपैंड योर पॉइंट फर्दर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने बुक छोड़ दिया, वो खुद से रिफ्लेक्शन से वो खुद से सोच रहा है कि अच्छा ये क्लैरिफिकेशन मुझसे पूछी गई है तो मैंने इसका जवाब देना। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन इशू। तो बुक के अंदर एक चीज़ पता नहीं डिफरेंट हो, वो बच्चा जो है वो सोचेगा कि जी मेरे हिसाब से ये है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस आ रही है। और फिर अजम्पशंस जो हैं, समटाइम्स अजम्पशन बच्चे जो है वो कुछ जो बुक्स के अंदर डायरेक्ट इस तरह से लिखा होता है, तो हमने उनको ये सिखाना है कि आप अप्रोक्सीमेशन अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट के हिसाब से भी, तो फिर वो कुछ आंसर उनके डिफरेंट आ जाएंगे। एविडेंस पूछी जा सकती है, उसके बाद व्यू पॉइंट उनका पूछा जा सकता है कि कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास, वो बताएं जी 14 निकात की एग्जाम्पल है आपकी 15 क्यों नहीं हुए थे, या नुक्ता जो 7 था वो क्यों आया, सिर्फ उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए कि जी वो क्यों इम्पोर्टेंट है आप बताएं, जरा व्यू पॉइंट अपना दें।
बुक नहीं है उसमें, लेकिन वो एक ख़ास तरह का एंगल है, सोचने का तरीका है। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब दिया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो भी हम सोल्यूशन देंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाए, रीजंस वाले भी चीज़ें जो है वो पूछी जाए। और एट द एंड कोर्स फाइल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी पढ़ाया वो अपनी कोर्स फाइल में डाल दी। टेबल है उसमें, प्लान्स है कि जी किस तरह से लेके चलना है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं, क्विज मैंने फाइनल एग्जाम्स हैं, फिर रिजल्ट्स हैं, एट द एंड कि किस तरह से मैं कोर्स को बेहतर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएगी। तो इसको जो है हम कहते हैं जी कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ चीज़ें जो हो जाएंगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हैंड रेज जिनके हुए हैं वो जी कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक द क्वेश्चन। थैंक यू। ये तानसा शरीफ से कोई हैंड रेज है आपके, काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस, गो ऑन प्लीज। जी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है so we can discuss. Yeah, I think there are no questions. So I believe it that Dr. Amjad is with us. Dr. Saab, can you hear my voice? जी आसिफ साहब, you are quite loud and clear. Thank you very much, sir. Are we ready to start, sir? Yes, of course, please. Thank you very much, Dr. Amjad, for being with us. And this is time to start the second session of the day. And this session is about examination policies, grading and marking system, especially in semester system. And this session will be conducted by Dr. Muhammad Amjad, and Dr. Shahid Imran has already given his introduction to all of you. So I would request Dr. Amjad to please take over and start the session. Dr. Saab, over to you. Thank you very much, Asif sir. Thank you so much. Dear participants, welcome back after a short break. So this is the second session, which is purely based on the examination policies, grading and marking systems. So I am Dr. Muhammad Amjad. So I am serving as Associate Professor in Department of Mechanical, Mechatronics and Manufacturing Engineering, UIT Lahore. So this is the main contents that we are going to discuss in this second session. It should be two rather. So before we start the session, formally we will have a short discussion on the opening survey results, the same survey that the audience responded at the start of the session 1. Then we will be discussing undergraduate semester structure and understanding the core scores in the semester system. And then there will be some discussion on teachers' responsibilities in an exam and marking and grading systems in the semester system, and then how GPA and CGPAs are calculated in the semester system. And finally, we will conclude our session by discussing different examination progression policies under the semester system. So before we start the session formally, let's have a short and brief discussion on the opening survey results. So please bear with me. I'm just switching my screen to the survey results. Please bear with me. So we got about 22 responses in this morning, and then the link was deactivated. So we were expecting more than 25 responses.
but it's okay. I think this is more than 90% of the turnover. So the first three questions are regarding the demographic information of the audience, in which the first question is total relevant to total teaching experience. So we can see that about 96% people are having 3 or more than 3 years of teaching experience. Then question number 2 is regarding the department that you are serving in. So we can see a diverse audience from different departments from different colleges. And then the question number 3 is regarding the highest academic qualification. So we can see that about 60% people are having 18 years of education, while about 36% people are having 16 years as their highest academic qualification, and there are some PhDs today in our cohort that we are dealing today. Question number 4 onwards are some questions from different sessions that we are having today. So Dr. Fahad Noor was giving his insights on the in-class assessments, and the session 2 is based on the rules and regulations and examination policies of the semester system, and session 3 will be conducted by Dr. Shahid Imran, which is particularly focused on the meaningful engagement between the students and the teacher in the semester system. So this survey has questions from all these 3 sessions. So question number 4 onwards are basically the questions based on from different 3 different sessions that we are having today. So question number 4 is, have you ever worked in a semester system? About 73% people, they are already working or they have worked under the semester system, whereas we have about 27% people, they are new to the semester system. Similarly, question number 5 is, are you familiar with how does credit hour system work? So we got about almost the same results as in question number 4. So about 68% people, they say yes, we are familiar with the credit hour system, and about 32% people, they are basically new to the credit hour system. And we have some very tricky question at the end of the survey, that whether this claim is really true or not. Anyway, so to move on, question number 6. While teaching a module, a teacher can gauge the learning needs of a student without making an assessment. So the correct options to question number 6 are strongly disagree or simply disagree, because without having assessment, the teacher, even nobody can gauge the learning need, or nobody can assess what is the learning level achieved so far. So this is basically the assessment that tells us what is the learning level of the audience. So in the same way, we have the opening survey this morning to just assess what is the learning level of the audience regarding the day and the different sessions. So the correct options to question number 6 are strongly disagree or simply disagree. So we can see about 36% are agreeing with this statement, which is actually not an answer. So while teaching a module, a teacher cannot gauge the learning needs of a student without making an assessment. This was actually the correct option. The correct statement. Number 7, teaching learning can improve if both the teacher as well as students know the intended learning outcomes. So we got the 100% correct response from the audience. So the correct options are strongly agree or simply agree for question number 7. So regarding this question number 6, question number 7, 8 and 9
there will be a third session which will be conducted by Dr. Shahid Imran to have more insights regarding the motivation, regarding the paradigm shift, and regarding the meaningful engagement in the class between the students and the teacher. Then question number 8, the students' motivation to learning shall be enhanced if they know that their degree is in line with the national and international benchmarks. So again, the correct options are strongly agree or simply agree. So we got about 90 to 91% correct response, but there are some other options. So I think they were just an accidental response. So maybe when the same survey will be presented as closing survey, the audience or the participants will mark the correct options. So the answers to question number 8 are strongly agree or simply agree, because the motivation to learning is increased when even the students are confident that their degrees are accepted nationally and as well as internationally. So the correct options are strongly agree or simply agree for question number 8. Question number 9 tells us the opportunities for improvement for a teacher are reduced if he or she does not periodically assess their plan of action. Plan of action for a particular cohort. So this is again a question from session that assessments. So the more the assessments, the more will be the opportunities for improvement. So the correct options are strongly agree or simply agree. So we got 100% correct response from the cohort that we are dealing with today. Then question number 10, the student-teacher interaction can become more meaningful if the assessment process is more transparent. So here we have two very clear topics. The meaningful engagement, we can see the student-teacher interaction or the engagement, and then the assessment process transparency. So almost we can see that 100% of the audience is in agreement with this statement that if the assessment process is more transparent, there will be a healthy student-teacher interaction and there will be a meaningful engagement between the students and the teacher. So the correct options are strongly agree or simply agree. Then from question 11 onwards, we got these questions from some rules and regulations and policies of the semester system. So here we can also test the claim that was made in question number 4 and 5, whether the audience are familiar with the semester system or actually they know how the credit hour system works. So the length of summer semester can vary between 5 to 7 weeks. Is a particular question from the rules and regulations of the semester system. So the length of the semester system can vary between 5 to 7 weeks. The correct option is no. So we can see about 9% of the audience have it correctly. The length, by the way, this is not the examination of the audience or the participants. So basically this was just to assess the understanding level, or you can say what is their perception about the semester system, their rules and regulations and policies. So we can see that 9% people have marked it correctly. So the correct option to question number 11, the length of the summer semester can vary between 5 to 7 weeks is no. The length of the summer semester is not between 5 to 7 weeks. What is the length of the summer semester? We will be discussing this policy in our session that will. Question number 12. Hours 3-1 are. No, this is a tricky question. By the way, this is a test of the claim that the audience made in question number 4 and 5. Number of contact 3-1 are
the correct option is 6, or even sometimes 5 is okay. But we can see about 23% people have marked the correct option. So the number of contact hours for a subject with credit hours 3, 1 or 6. It's not 3, it's not 4. So how it is 6? I think Dr. Fahad Noor in his first session has already explained a little bit, and I will also be starting with my session with the discussion on the credit hours and contact hours, and then Dr. Shahid Imran in his third session will be showing some light how the contact hours are determined from the credit hours and what are the credit hours actually. So the correct option to question number 12 is 6. The number of contact hours for a subject with credit hours 3, 1 or 6. So how it is 6, we will be discussing in our second session right after this opening survey discussion. Then question number 13 says the degree completion time in a semester system is fixed to 4 or 5 years time. Let's say if this is a 4 years degree program, then is it fixed to 4 years? If it is a 5 years degree program, then is it fixed to 5 years? The correct option is again no. So the degree completion time is not fixed to 4 in case of 4 years degree program, and it is not fixed to 5 in case of 5 years degree program. The correct option is no. So why it is no? The answer will be right after this opening survey discussion. Then question number 14, a student who falls ill on the day of final assessment shall be awarded which grade? So actually these are very less familiar grades in our faculty. So W, WF, I and F grades. So we can see about 68% people have responded this question with F grade. So, but the fact is different. In the semester system, if any student falls ill on the day of the final assessment, या अगर वो final exam में appear नहीं हो पाता किसी बीमारी की वजह से या किसी genuine excuse की वजह से, तो उसको exemption है, उसको F grade नहीं देंगे semester system में, उसको I grade मिलेगा. The correct option is I grade. So if any student falls ill on the day of the final assessment, then the student will be awarded as I grade if some certain conditions are fulfilled. So what are I grades, what are WF grades, and what are W grades, and what is their impact on the calculation of CGPA and GPA? So we will be discussing all this stuff in our second session right after this discussion on the opening survey results. Then question number 15 says in a semester system, the student failing to achieve a minimum CGPA threshold in first year are what? Readmitted, relegated or removed. So we can see that about 50% of the audience say that the students who are basically failing to achieve a minimum CGPA in the first year, they are removed from the university. But actually the correct policy is they will be relegated. So what is relegation and under what circumstances the student is relegated, we will be discussing in our second session. So basically relegation is a term that is also can be also interpreted as retention. So the student is not promoted to second year if he fails or if the student fails to maintain a minimum CGPA threshold, then the student is retained in the first year. So he or she is not promoted to second year. So this term is known as relegation in the semester system. So the correct option is the student will be relegated if he or she fails to achieve a minimum CGPA threshold. So the correct option is relegated. Then question number 16 and 17, they are again from the very first session conducted by Dr. Fahad Noor. The first level of psychomotor domain is, I think it's very much clear after the first session now. Now the first level of psychomotor domain is imitate. We can see about
18% people have already marked it correctly. So I hope when this survey is presented as closing survey at the end of the day, all of the participants will mark the correct option. So the correct option to question number 16, the first level of psychomotor domain is imitate, manipulate, and so on. So imitate is the correct option. Then question number 17, apply is third level of which domain in Bloom's taxonomy? So the correct option is cognitive domain. Apply is the third level of cognitive domain in Bloom's taxonomy. So I think that Dr. Fahad Noor has already explained all these levels and different domains in the semester system under OBE, outcome-based education. So apply is third level of cognitive domain. Cognitive is the correct option in question number 17. Then if we move on, question number 18, 19 and 20, they are relatively descriptive questions and the descriptive answer. So we have recorded all your responses specifically regarding the challenges of the adoption of the semester system. So we can see some of I mean, we have all the list that you have the challenges that you are facing in the adoption of the semester system. So there are some lack of facilities, lack of infrastructure, lack of training, and so staff training and deficiency of the experience. So there are all of these descriptive responses are recorded, and we will be compiling a report on all these presented that are presented to the chairman PC for further necessary actions. So actually, the main motive of this opening is regard the basic challenges or the main challenges that you guys are facing in the adoption of the semester system. So this was all about the opening survey. So now I am switching back to my session slides. So please bear with me. I'm just switching my screen back to the slides, please. All right. So this was all about the discussion on the opening survey. So I hope when this same survey will be served as closing survey, so all of you will be marking the correct options as per our discussion. Now, at the start of the second session, I will recap some of the terms that are frequently used in the semester system. So these terms, we will start with the credit hours. The credit hours for the theory lab, for the theory class, and the contact hours for the theory as well as the contact hours for the lab. So we know that in the theory class, there are the main medium of teaching, or you can say the main medium of learning is the lectures. So teaching learning is through lectures in the theory courses, whereas in the lab courses the learning is through performance, some practicals, and some psychomotor performance. So we have different definition of contact hours and for the theory course and for the lab course. So let's say there was a question in the opening survey that what are the number of contact hours for a course having credit hours as 3,1. So let me make it clear that this can be written as 3,1. This is also written as 3 plus 1, or sometimes this is also written as 3-1. So these are different notations of expressing the number of credit hours for any subject. So यहाँ पे जो पहला number है, the very first number shows the credit hours for the theory course, and the second number shows the credit hours for the lab course.
सो पहला नंबर जो है वो थ्योरी का है और दूसरा नंबर जो है वो लैब का है। ठीक है जी। अब थ्योरी के लिए जो क्रेडिट आवर्स और कॉन्टैक्ट आवर्स हैं, आई थिंक डॉक्टर फहद नूर ने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफाइन कर देते हैं। सो वन क्रेडिट आवर फॉर द थ्योरी is equal to one contact hour for the theory। so theory के लिए एक क्रेडिट आवर जो है वो एक कॉन्टैक्ट आवर के इक्वल है। ठीक है जी। सो लेट्स से अगर 3 क्रेडिट आवर्स हैं थ्योरी के लिए, तो उसका जो कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे वो भी 3 होंगे। ठीक है, यू कैन से 3 इज इक्वल टू 3। बट इन केस ऑफ लैब, ये तो डेफिनेशन है थ्योरी के लिए। लैब के लिए एक क्रेडिट आवर जो है, 1 क्रेडिट आवर ऑफ द लैब इज इक्वल टू 3 कॉन्टैक्ट आवर्स फॉर द लैब। सो इस हिसाब से अगर हम देखें, लैब के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि एक क्रेडिट आवर जो है वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स के इक्वल है, जबकि थ्योरी में एक क्रेडिट आवर जो है वो एक कॉन्टैक्ट आवर के इक्वल है। सो यहाँ पे जो ओपनिंग सर्वे में ये वाला क्वेश्चन था कि एक कोर्स है जिसके क्रेडिट आवर 1 है, तो उसके कॉन्टैक्ट आवर्स कितने होंगे। सो उसके कॉन्टैक्ट आवर्स अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि पहला नंबर जो है वो थ्योरी का है और दूसरा नंबर लैब का है। सो थ्योरी के लिए जितने क्रेडिट आवर है उतने ही कॉन्टैक्ट आवर है। सो वी कैन से 3 कॉन्टैक्ट आवर फॉर द थ्योरी, और क्रेडिट आवर के लिए जो जो सेकंड नंबर है वो लैब के लिए है, और लैब के लिए एक क्रेडिट आवर जो है वो 3 कॉन्टैक्ट आवर के इक्वल है। हम रखें तो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स फॉर द थ्योरी कोर्स and 3 contact hours for the lab course। So 3 plus 3 will make 6। So for any course having 3,1 credit hours, the total number of contact hours will be 6। इसके अलावा इसमें कोई एक तो और केसेस भी डिस्कस किए जा सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक कोर्स है जिसके क्रेडिट आवर हैं, इसको ये कोई भी नंबर हो सकता है, दैट मे बी 3, दैट मे बी 2, दैट मे बी 0। So let's say 201 है, या you can say it's 2 plus 0। अब ये क्रेडिट आवर हैं और इसके कॉन्टैक्ट आवर्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, तो हमें पता है कि जो पहला नंबर है वो थ्योरी का है, दूसरा नंबर जो है वो लैब के लिए है। थ्योरी के लिए ये वाला फार्मूला है कि एक क्रेडिट आवर जो है वो एक कॉन्टैक्ट आवर के इक्वल है, और लैब के लिए एक क्रेडिट आवर जो है वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स के इक्वल है। सो एक कोर्स जिसके ये वाले क्रेडिट आवर्स हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट आवर्स बनेंगे वो क्या होंगे, 2 plus 0 is equal to 2। तो उसके कॉन्टैक्ट आवर जो है वो 2 होंगे। इसी तरह एक और कोर्स है जिसके क्रेडिट आवर ये हैं 0,1, तो उसकी जस्ट लैब है, उसकी थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसमें 0 क्रेडिट आवर है थ्योरी के, और लैब का एक क्रेडिट आवर है। तो हमें पता है कि लैब का एक क्रेडिट आवर जो है वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स के इक्वल है। तो इस कोर्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आवर्स बनेंगे दैट विल बी बेसिकली 3। इसी तरह एक और सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसका एक क्रेडिट आवर थ्योरी का है और 2 क्रेडिट आवर जो है वो लैब के। सो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आवर्स बनेंगे वो कितने होंगे जी, 1 प्लस ये सेकंड नंबर जो है वो लैब के लिए है, और लैब के लिए हमें पता है कि एक क्रेडिट आवर जो है वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स की इक्वल है। तो 2 क्रेडिट आवर जो है वो दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू 6 कॉन्टैक्ट आवर। इस कोर्स के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आवर्स हो जाएंगे 7। I hope it's clear now. So I think there should not be a problem in understanding the contact hours because in the semester system everything revolves around the credit hours। So students की जो स्टूडेंट्स की डिग्री की क्वालिफिकेशन है, आया कि उनको डिग्री अवार्ड ऑफ द डिग्री के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, वो क्रेडिट आवर्स की बेस पे है। स्टूडेंट जो है वो रेगुलर स्टूडेंट है या वो कैजुअल स्टूडेंट है, उसकी डेफिनेशन कॉन्टैक्ट क्रेडिट आवर्स की बेस पे है। और इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, इसकी डेफिनेशन भी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट आवर्स ही हैं। सो आप कह सकते हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम में हर चीज़ जो है वो क्रेडिट आवर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है।
So I think after discussion, everything is clear about the credit hours and conduct hours. इसमें एक चीज जो है यहाँ पे है, थ्योरी जो है इसका तो सिंपल है, 1 क्रेडिट आवर इज इक्वल टू 1 कॉन्टेक्ट आवर, लेकिन लैब के केस में कुछ यूनिवर्सिटीज में 1 क्रेडिट आवर जो है वो इक्वल टू 3 है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 1 क्रेडिट आवर जो है वो इक्वल टू 2 है। सो ये डेफिनेशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है 1 क्रेडिट आवर इज इक्वल टू 3 कॉन्टेक्ट आवर, ये ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। सो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। अच्छा, जिसके बाद क्रेडिट आवर्स एंड कॉन्टेक्ट आवर्स के बाद बड़ी जो फ्रीक्वेंटली टर्म यूज होती है सेमेस्टर सिस्टम में वो एकेडमिक ईयर है। तो एकेडमिक ईयर इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल ईयर। तो एकेडमिक ईयर जो है वो स्टार्ट होता है सितंबर और इसका एंड होता है एंड ऑफ अगस्त, और एक एकेडमिक ईयर में डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं। सो इन एन एकेडमिक ईयर वी हैव रेगुलर सेमेस्टर्स और वी हैव समर सेमेस्टर्स। सो रेगुलर सेमेस्टर के आगे दो इसमें हैं, एक है इसका फॉल सेमेस्टर, ठीक है जी, फॉल सेमेस्टर है, और एक स्प्रिंग सेमेस्टर है। स्प्रिंग सेमेस्टर अभी जो है वो अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो अभी स्प्रिंग सेमेस्टर जो है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। इस तरह समर वेकेशंस में जो सेमेस्टर ऑफर करते हैं दैट इज समर सेमेस्टर, और इसके भी आगे हम जाकर देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। सो एक एकेडमिक ईयर में 2 रेगुलर सेमेस्टर्स होते हैं और एक नॉर्मली एक समर सेमेस्टर होता है, ठीक है। Academic calendar is basically a list of all the activities that are going to happen in or we need to organize in the whole academic year. इसमें start of the semester है, फर्स्ट असेसमेंट कब होगी, सेकंड असेसमेंट कब होगी, मिड टर्म्स कब होंगे, और इसके बाद सेमेस्टर जो है वो ख़त्म कब होगा और रिजल्ट्स कब तक कंपाइल होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर कब होगा एंड सो ऑन। सो आप कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे साल में करना है वो एकेडमिक कैलेंडर में वो आप जो है वो नोटिफाई करते हैं। एंड दिस एकेडमिक कैलेंडर इज बेसिकली नोटिफाइड by the academic branch of the university. So just to confirm, can anybody please confirm whether I am audible and my screen is visible to everybody? Asif Saab or anybody from the audience, can you please confirm, because I am आपकी आवाज Dr. Amir, thank you. I hope I am audible and my screen is visible to everybody. Thank you so much, Dr. Amir. अच्छा जी, इसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके बाद रेगुलर स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन है। स्टूडेंट जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में क्लासीफाई उसको करते हैं हम एज ए रेगुलर स्टूडेंट, या हम उसको कैजुअल स्टूडेंट कहते हैं। सो जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट इज दैट स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड at least 12 credit hours in the regular semester. 12 credit hours in the regular semester. ये वाली जो क्लासिफिकेशन है जिसमें स्टूडेंट को रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं या कैजुअल स्टूडेंट कहते हैं, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स अ स्टूडेंट is registering in a regular semester. So if a student is registering equal to 12 or more than 12 credit hours in a regular semester, the student is termed as regular student. And if the student is registering less than 12 credit hours, sorry, it's less than 12 credit hours in a regular semester, then the student is termed as casual student. और इसी तरह आगे जाके हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट 4 साल या 5 साल जो उसका मिनिमम टाइम है, उसके बाद अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कोर्सेज को क्लियर कर रहे हैं, सो उनको भी हम कैजुअल स्टूडेंट कहेंगे। सो रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो मिनिमम टाइम ऑफ द डिग्री के अंदर होते हैं, और वो वाले स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे जो 12 क्रेडिट आवर या इससे ज़्यादा का जो क्रेडिट आवर है वो एक रेगुलर सेमेस्टर में रजिस्टर करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स की एक और क्लासिफिकेशन भी है जिसे हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट या थर्ड ईयर स्टूडेंट कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये भी बेसिकली इट्स नॉट द टाइम दैट डिसाइड्स दैट दिस इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दिस इज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। अगर वो एडमिशन से 1 साल के बाद उसका दूसरा साल शुरू हो गया, लेट्स से एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, तो उसको सेकंड ईयर का स्टूडेंट कहेंगे, ऐसा नहीं है।
बल्कि ये वाली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द क्रेडिट आवर्स. सो बेसिकली ये वाली जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, ये क्लासिफिकेशन बेस करती है उसके जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड क्रेडिट आवर्स है. तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली उसके क्रेडिट आवर्स 0 to 32 हैं. So this is the credit hours for the students. So if a student has completed credit hours in the range of 0 to 32, then the student is termed as first year student. And if the completed credit hours are between 32 to 68, sorry, then the students are termed as second year student. So चाहे उसका चौथा साल है, लेकिन अगर उसके completed credit hours जो है वो 32 to 68 हैं, तो उस स्टूडेंट को जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में उसको सेकंड ईयर का स्टूडेंट कहेंगे. और अगर उसके क्रेडिट आवर जो है वो मिनिमम 68 हो गए हैं, उसके एटलीस्ट 68 कंप्लीट हो गए हैं और वो है बिटवीन 68 to 104, तो उस स्टूडेंट को जो है वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट कहेंगे. अब अगर उसके 68 से कम है तो चाहे वो थर्ड ईयर में आ गया है, लेकिन वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट बाय डेफिनेशन नहीं होगा. ठीक है जी. सो ये जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट की, ये भी उसकी क्रेडिट आवर्स से रेलिवेंट है. जो कंप्लीटेड क्रेडिट आवर्स हैं, जो पास्ट हैं, जो जिसमें उसने खुद को पास किया है. और इसी तरह फोर्थ ईयर का जो स्टूडेंट है उसके एटलीस्ट 104 क्रेडिट आवर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ही और शी इज इन द वे ऑफ बिटवीन 104 to 140. ठीक है, 140 है या 124, बेसिकली 124 मिनिमम है. सो जो डिग्री क्वालिफिकेशन है, अवार्ड ऑफ द डिग्री है, वो मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स पे जो है वो बेस करती है. सो भी आगे जाके देखते हैं कि वो क्या होगी. सो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट जो है उसके क्रेडिट आवर्स बिटवीन 104 to 140 होते हैं. सो ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है, वेदर द स्टूडेंट इज क्लासिफाइड एज अ रेगुलर स्टूडेंट और अ कैजुअल स्टूडेंट or first year, second year or third year or fourth year student, all of this classification is based on the number of credit hours. So regular student and casual student is based on the number of credit hours a student is registering in a particular semester, and the first year, second year, third year, fourth year classification is based on the number of credit hours completed by the student so far. Then if we move on, the very frequent term in the semester system is prerequisites. So prerequisites are those courses that must be passed before registering any higher level course. So let's say we have two courses. One course is offered in the first year. Let's say this is the fundamentals of physics, and we have another course, let's say, or applied physics, which is offered in the third year or in the second year. So for any student who want to register in applied physics course, he or she must have passed the course of fundamentals of physics which was offered in the first year. ठीक है जी. So इस केस में जो fundamentals of physics है, that will become a prerequisite for advanced physics. ठीक है जी. जो फंडामेंटल जो फिजिक्स का नॉलेज था वो आगे एडवांस फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में वो यूज होने हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट अप्लाइड फिजिक्स में एंड वो रजिस्टर होना चाह रहा है, वो अपना जो फंडामेंटल जो फिजिक्स वाला कोर्स है वो पहले पास करेगा. उसके लिए ज़रूरी है कि वो पास करे, अदरवाइज वो उसमें रजिस्टर नहीं हो सकता. सो प्री रेक्विजिट्स आर दोज कोर्सेज दैट मस्ट बी passed by the students before registering any higher level course. इसी तरह core requisites हैं. So core requisites are basically those courses that should be registered in the same semester. Like जिस तरह कि हमें पता है कि ये 3,1 है एक कोर्स है जिसमें ये वाला जो है ये theory है और ये वाला कोर्स जो है ये lab है. So both theory and lab they are registered in the same semester. So in this case, theory and lab courses, they are core requisites in the semester system. Now we move on to the undergraduate semester structure. So in undergraduate semester structure, program duration. Now there was a question in the opening survey that the degree completion time is fixed to 4 or 5 years in a semester system.
So basically, degree program is not fixed to for 4 years for a 4-year degree program, and it is not fixed to 5 years for a 5 years degree program. So normally जो minimum time है वो 4 years का है. Let's say अगर 4 साल प्रोग्राम है तो minimum जो time है वो 4 साल है. 4 साल से पहले बच्चा डिग्री नहीं ले सकता by definition, by rule. ठीक है. और स्टूडेंट के पास 4 से लेकर 6 साल तक होते हैं कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें. ठीक है. सो उनके पास जो फिक्स टाइम जो है वो फिक्स नहीं है. टाइम बिटवीन 4 to 6 years वेरी करता है. और इवन स्टूडेंट का अगर कोई जेन्युइन इशू हो तो उसको एक और साल भी जो है वो दिया जा सकता है. द स्टूडेंट मे बी अवॉर्डेड 1 more year आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडीज. सो इस तरह स्टूडेंट्स के पास 4 से लेकर 6 साल का नॉर्मल टाइम है. सो विदाउट एनी अप्रूवल मिनिमम 4 years है. 2 years एक्स्ट्रा है कि अगर उसका कोई कोर्स रह गया है या वो किसी वजह से कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया या वो फर्दर इंप्रूव करना चाहता है अपना CGPA, तो उसके पास 4 से 6 साल का टाइम है वो उसमें कंप्लीट कर ले. और अगर कोई वाकई जेन्युइन रीजन है तो एक और एक्स्ट्रा साल के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है और वो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक एकेडमिक काउंसिल वगैरह से. अब अगर टाइम फिक्स नहीं है, अगर डिग्री अवार्ड के लिए टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर क्या फिक्स है? किस बेस पे डिग्री जो है वो अवार्ड की जाए, या डिग्री अवार्डिंग क्राइटेरिया क्या है? So degree awarding criteria is basically total number of credit hours. So the degree is awarded on the basis of the total number of credit hours completed by the student. So the minimum number of credit hours are 124 and the maximum is 140. So all of the degree programs, basically 4 years degree program, they lie in this range. So the student has to complete this many number of credit hours in order to qualify for the award of the degree. तो जो फिक्स है चीज, आप कह सकते हैं कि वो क्रेडिट आवर्स की बेस पे उसको जो है वो डिग्री मिलनी है, ना कि उसका जो टाइम है उसकी बेस पे कि 4 साल गुजर गए हैं, चाहे कोई क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी, चाहे वो कॉलेज में आया है या नहीं आया, 4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं है. बल्कि उसने नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो 4 साल में कर ले, वो 5 साल में कर ले या वो 6 साल में कर ले. और वो सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो है वो जब कंप्लीट होंगे तो उसको जो है वो डिग्री अवार्ड की जाएगी. इसके बाद सेमेस्टर ड्यूरेशन है. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी गॉट 2 रेगुलर सेमेस्टर्स एंड 1 समर सेमेस्टर. सो जो रेगुलर सेमेस्टर्स हैं वो फॉल सेमेस्टर है और एक स्प्रिंग सेमेस्टर है. ठीक है जी. सो रेगुलर सेमेस्टर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज नॉर्मली बिटवीन 16 to 18 weeks. The duration of the regular semesters is between 16 to 18 weeks time. So यहाँ पे जो 16 weeks time है ये टीचिंग टाइम है और 2 वीक एक्स्ट्रा है एग्जामिनेशन के लिए. 1 वीक जो है वो मिड एग्जाम के लिए है और 1 वीक जो है वो एंड एग्जाम्स के लिए. सो इसी तरह हमारे पास समर सेमेस्टर्स हैं. नॉर्मली एक समर सेमेस्टर ऑफर होता है जो कि समर वेकेशंस में होता है. और द लेंथ ऑफ द समर सेमेस्टर, ये भी एक क्वेश्चन था सर्वे में. सो द लेंथ ऑफ द समर सेमेस्टर इज बेसिकली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेगुलर सेमेस्टर्स. सो हमें पता है कि रेगुलर सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन या उसकी लेंथ है वो 16 to 18 वीक्स है. तो समर सेमेस्टर की जो लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेगुलर सेमेस्टर्स. सो इस केस में द लेंथ द ड्यूरेशन ऑफ द समर सेमेस्टर विल बी बिटवीन 8 to 9 weeks, not between 5 to 7 weeks. So survey में question ये था, the length of the summer semester is between 5 to 7 weeks. The answer was no. The length of the summer semester is not between 5 to 7 weeks, but the length of the summer semester is half of the length of the regular semesters. और regular semesters की जो length है या duration है वो 16 to 18 weeks है. So इस हिसाब से जो summer semester है that is between 8 to 9 weeks. नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि जो 8 वीक्स का टाइम होता है समर सेमेस्टर के लिए. सिमिलरली क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर. सो ऑल ऑफ दीज क्रेडिट आवर्स आर divided into 8 semesters for a 4-year degree program and into 10 semesters for a 5 years degree program.
और हर सेमेस्टर के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो है वो ऑफर होते हैं। सो इसमें जो नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स ऑफर होते हैं वो 15 to 18 सॉरी 12 to basically this is between 15 to 18 credit hours, 15 to 18 credit hours for first 2 years. सो पहले 2 सालों में डिग्री के जो पहले 2 साल हैं या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स दे मे रजिस्टर इज 18. So 18 is the maximum limit for first year and second year students, right? And this is 21 for the third year and fourth year students. So ये भी इसकी भी एक रीजन है 18 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, और जो है वो मिनिमम हमने रखा हुआ है, आपको पता है कि मिनिमम जो है वो 12 है। सो 12 से अगर नीचे जाएगा स्टूडेंट तो वो कैजुअल स्टूडेंट हो जाएगा, दैट स्टूडेंट विल नॉट बी रेगुलर स्टूडेंट। और इस तरह मैक्सिमम की भी एक लिमिट है या कैप सेट की हुई है, उसकी वजह भी यही है कि आप जैसा कि डॉक्टर फहद नूर ने बताया कि द स्टूडेंट मस्ट बी ट्रेन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स in order to attain the learning level. So for the first year and second year students, the maximum number of credit hours a student can register in a regular semester are 18, and for the third year and fourth year students, the maximum number of credit hours are 21. Now, after understanding the basic undergraduate semester structure, this is very important to understand the course code in the semester system, because you will see every subject or every course has some code at the start, at the beginning, right? So अगर हम इस कोर्स कोड को देखें तो इसके 2 हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा जो है वो अल्फाबेटिकल है और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो न्यूमेरिकल है, नंबरल। पहले में एबीसी होगा, दूसरे में कुछ नंबर्स होंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है कोर्स कोड का, जो अल्फाबेटिकल पार्ट है, दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि वो FA है, सो इट मींस फाइन आर्ट्स। सो BSc फाइन आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम के लिए ये कोर्स ऑफर हो रहा होगा। इसी तरह अगर हमारा एक कोर्स है वो शुरू हो रहा है MATH से, तो इट मींस दिस कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड फॉर मैथमेटिक्स डिग्री प्रोग्राम। Similarly, if we have, let's say in our department, we have a course code of ME, which means mechanical engineering. So the first part, or you can say the alphabetical part of the course code shows the name of the program, whereas for the second part of the course code, the very first digit, इसमें जो पहला नंबर है वो शो करता है ईयर को, कि ये कोर्स किस साल में ऑफर होगा, ठीक है। If it is 1, then it means that this course is offered in this course is offered in the second year, 3, 4 है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में इस कोर्स को जो है वो ऑफर किया जाएगा। इसी तरह जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर डोमेन और द स्ट्रीम ऑफ द कोर्स। अब जो डोमेन है या स्ट्रीम है ये क्या है, ये बेसिकली एक करिकुलम है। सो करिकुलम के अंदर डिफरेंट डोमेन्स या डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास एक BSc केमिस्ट्री का कोर्स, BSc केमिस्ट्री का जो है वो एक प्रोग्राम है। सो उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, अप्लाइड केमिस्ट्री होगी, और इसी तरह जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी एंड सो ऑन। सो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सो इनको नंबर देते हैं फ्रॉम 1 to onwards और इवन फ्रॉम 0 to onwards। सो जो बेसिकली सेकंड नंबर है दैट शोज द डोमेन नंबर और द स्ट्रीम नंबर ऑफ द करिकुलम, and the third number shows the course number in that particular stream. अब लेट्स से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डोमेन है, सो इसके अंदर फर्दर 3, 4, 5 कोर्सेज होंगे। सो इनका भी नंबर होगा 1, 2, 3, 4 या समटाइम्स 0 से भी स्टार्ट होते हैं। सो ये जो थर्ड नंबर है दैट शोज द कोर्स नंबर इन एनी गिवन स्ट्रीम, ठीक है। जिसको एक एग्जांपल से जो है वो हम समझ सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कोर्स है जिसका कोर्स कोड जो है वो MATH 358 टोपोलॉजी। अब जो टोपोलॉजी है ये कोर्स टाइटल है, ये उसका नाम है, और ये वाला जो चीज है ये उसका कोर्स कोड है।
अब यहाँ पे देखें जो MATH, इसका मतलब है कि ये BSc मैथमेटिक्स डिग्री प्रोग्राम है या BSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, जहाँ से ये कोर्स आ रहा है, इसका जो इनिशिएटिंग ओरिजिन है, ठीक है जी। और इसका ये जो थर्ड है, दिस कोर्स इज ऑफर्ड इन द थर्ड ईयर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, एंड द स्ट्रीम नंबर ऑफ दिस कोर्स इज 5। तो ऑब्वियसली BSc मैथमेटिक्स डिग्री प्रोग्राम जो है उसके करिकुलम में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सो ये वाला जो कोर्स है टोपोलॉजी, ये 5th स्ट्रीम से आ रहा है, और 5th स्ट्रीम में इस कोर्स का जो नंबर है वो 8, ठीक है जी, जिस आउटलाइन किया है। और इसी तरह एक और चीज जो है वो लेट्स से ये है MGT 256 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये एक और कोर्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग इसका कोर्स टाइटल है, और ये इसका जो है वो कोर्स कोड है। सो MGT नेम ऑफ प्रोग्राम है, BSc मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम, सेकंड ईयर में ऑफर हो रहा है, और ये 5th स्ट्रीम से आ रहा है, और कोर्स नंबर जो है वो 6th है इन दैट पर्टिकुलर 5th स्ट्रीम। और इसी तरह एक और एग्जांपल है FA 244 मिनिएचर पेंटिंग 1। सो मिनिएचर पेंटिंग 1 जो है वो उस कोर्स का नाम या उसका टाइटल है, और ये उसका कोर्स कोड है। FA shows the name of the degree program, right, fine arts, and this course is offered in the second year, and this course is coming from the 4th stream of the BSc fine arts degree program, and the course number in that particular 4th stream is number. So in some universities we have 4 digit as course code before the course title, और अगर 4 डिजिट है तो उसमें जो जिस तरह ईयर है, ये एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। सो अगर कोर्स डिजिट जो है, कोर्स कोड जो है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट 4 डिजिट्स का है, तो उसमें 4 डिजिट का है, तो उसके अंदर जो है वो सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन भी होगी कि लेट्स से ये सेकंड ईयर में है, लेट्स से ये वाला अगर देखें इसको, अगर मैं यहाँ पे 4th भी कर ये एक और नंबर ऐड कर दूँ, सो सेकंड ईयर है, और इसका जो है वो सेकंड ईयर में 3rd और 4th सेमेस्टर होंगे, तो सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में ये कोर्स आएगा, अगर यहाँ पे नंबर 4 नंबर्स जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट्स में 4 नंबर्स आ जाते हैं। तो लेकिन मोस्ट डोमिनेटली जो है वो 3 न्यूमेरिकल पार्ट है, लेकिन समटाइम्स सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन भी जो है वो कोर्स कोड में इंक्लूड कर दी जाती है। आई थिंक आफ्टर दिस डिस्कशन दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कोर्स कोड इन द सेमेस्टर system. Then we have different types of courses in the semester system. So we got 3 types of courses. Type A, all the theory courses are type A courses. जिस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि theory कोर्स है, लैब कोर्स है। So जो theory के कोर्सेज हैं वो सारे के सारे type A कोर्सेज हैं। So theory कोर्सेज में हमें बताया कि जो मेन मीडियम ऑफ टीचिंग है वो लेक्चर्स है। So lectures के थ्रू जो है वो हमारी टीचिंग लर्निंग होती है, ठीक है जी। इसके बाद टाइप बी कोर्सेज में सारे के सारे लैब्स या प्रैक्टिकल्स हैं। सो ऑल द लैब्स और द प्रैक्टिकल्स दे आर टर्म्ड एज टाइप बी कोर्सेज इन द सेमेस्टर सिस्टम, एंड वी नो दैट मैडम निगत रशीद, if you please mute your mic, thank you so much, thank you ji. So all the labs or the practicals, they are termed as type B courses in the semester system, and we know that teaching learning takes place through experiments, through studio laboratory, through designs, drawings, and small projects conducted, completed, and executed by the students in type B courses. So similarly, type C courses. Type C courses are all the comprehensive projects. So as you know that in the semester system we have a final year project. So all the final year projects are termed as type C courses in the semester system. So type A courses are theory courses, type B courses are the labs or the practicals, and type C courses are the final year projects or comprehensive projects which are completed by the students, whether inside or outside the laboratory under the direct supervision of the teacher. Now, what are the components of exams? Exam components of these courses. So we can see that there are 3 major components of the exam for all of these courses: sessional exams or sessional assessments,
mid exams, and then final exams. So specifically for type A courses. So sessional assessments include the class participation, the quizzes, assignments, and sometimes presentations. So we may have 2 to 5 quizzes. All of the quizzes may be sometimes MCQs. Sometimes we can start with the quiz, as we just started our day today with an opening survey. So these quizzes are basically, normally these are MCQs. Then we have some assignments given to the students, and the students are bound to submit the assignments by a given deadline. And then there may be some presentations, 5 to 10 minutes presentations, followed by a 5 to 10 minute question answer session. And these presentations may be individual presentations or the group presentations. And all of these sessional assessments basically contribute up to 20 to 30% of the total assessment. Now the mid exams and final exams, they are basically the written exams, the written assessments. ठीक है जी, इसमें 30% जो है वो नॉर्मली मिड्स का होता है, और जो रिमेनिंग 40 टू 50% है वो फाइनल एग्जाम में आप जो है असेस करते हैं. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट अप टू 10% जो है वो सिलेबस इंक्लूड किया जाता है मिड एग्जाम. दैट्स जो मिड एग्जाम में ऑलरेडी असेस सिलेबस की असेसमेंट हो चुकी है, उसका एग्जाम हो चुका है, अप टू 10% जो है वो उसमें से भी इंक्लूड किया जा सकता है. Now, अब आपका टीचिंग लर्निंग जो है वो खत्म हो गई है. Now this is the time for the examination. Now, what are the responsibilities of a teacher in an exam? What are the responsibilities of a teacher in an exam? So actually we have a discussion on this statement, on this topic, but due to lack of time, we will just go on the responsibilities after teaching. एग्जाम्स के अंदर जो है वो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो उसमें से सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द टीचिंग है, वो है टू सेट अ क्वेश्चन पेपर. सो देयर शुड बी अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर बेसिकली. सो व्हाट डू आई मीन बाय अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर? So a balanced question paper is one that basically differentiates between the students who are regular, who are working hard, whose understanding level is increased up to the required level, and who was doing all the assessments, all the assignments, and who was listening and attending all the sessions, and the students who are not doing all this stuff. So basically a balanced question paper should draw a line between the good students and the bad students. So I will not say bad, but I think it's better to use a bad term just to differentiate and to define the question paper. So क्वेश्चन पेपर जो है उसको एक लाइन ड्रा करनी है बिटवीन द स्टूडेंट्स जो आते थे, जो ना सिर्फ आते थे बल्कि सुनते भी थे, और जो उनको काम दिया जाता था वो करते थे, और उनके जो है वो लर्निंग लेवल इंक्रीज हुआ है, और दे वर कमिटेड एंड रेगुलर एंड दे वर कॉन्शियस टू लर्न. जबकि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि ना आते थे, अगर आ जाते हैं तो वो सुनते नहीं थे, और जो उनको काम असाइन दिया, लेट से कोई असाइनमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन है, वो उन्होंने नहीं की, या उन्होंने क्विज नहीं दिया, या इवन वो फाइनल जो एग्जाम हुए उसमें भी सम टाइम वो आते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं है. सो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अदर क्राइटेरिया द क्वेश्चन पेपर itself should draw a line between these two types of students. So ये जो है जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इस तरह से हो कि जिसने पढ़ा है, जो पेपर जो क्लास में आता था, जो घर जाके पढ़ता था, या जिसने असाइनमेंट्स की होंगी, वही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेगा. जो कभी क्लास में आया ही नहीं है या जिसने टीचर को सुना ही नहीं है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करे. सो आप ये कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन ऐसा ना बना दें, क्वेश्चन पेपर ऐसा ना हो कि सारे के सारे स्टूडेंट चाहे वो आते थे या वो नहीं आते थे, सारों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, या
आप इतना मुश्किल भी ना बना दें कि चाहे जो आता था और जो नहीं आता था वो बराबर है. So actually, by definition, the question paper should speak that who was coming to the class and who was not bothering even to come to the class. So ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देता है कि आपका जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो रेगुलर हैं, जो क्लास में ना सिर्फ आते हैं बल्कि आके केयरफुली अटेंटिवली सुनते हैं, और वो वाले स्टूडेंट जो ये सारे काम नहीं करते, देयर शुड बी अ line between these two, and this line is drawn by the question paper if it is a balanced one, if it is set with the caution and with this understanding. क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, दैट इज टू इन्विजिलेट द एग्जाम. सो इन्विजिलेशन जो है वो कोर्स टीचर या जो रेलिवेंट टीचर है वो वहाँ पे होता है जस्ट टू नंबर 1 इज टू अवॉइड एनी मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोई चीटिंग वगैरह ना हो. और सेकंडली अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर किया जा सके. और इसी तरह अगर वो प्रैक्टिकल है या लैब है तो उसमें सुपरवाइज करना है और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को असेसमेंट करनी है. इसी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की आफ्टर द एग्जाम, वो टू मार्क द आंसर बुक्स है. Marking of the answer book is very important as setting a balanced question paper. So the marking should be consistent throughout the cohort. ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम जब आप फ्रेश हैं, माइंड जो है वो बड़ा लाइट है और आप जो है वो स्टूडेंट्स का हर एक पेपर पढ़ के चेक कर रहे हैं, बल्कि वैसे तो पढ़ के करना चाहिए, लेकिन ये जो सुबह वाली मार्किंग है वो शाम के बिल्कुल सेम पैटर्न पे होनी चाहिए. और इसी तरह जब आप गुस्से में हैं तो आप बिल्कुल मार्क्स में कंजूसी वो हो क्या कहते हैं हो रही है, और अगर आप खुश हैं तो आप जनाब ऐसे ही नंबर दे जा रहे हैं. नो, ऐसा नहीं है. सो मार्किंग, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन भी था जिसमें आप लोगों का जो है वो 100% रिस्पॉन्स था कि अगर असेसमेंट सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, अगर असेसमेंट ट्रांसपेरेंट है तो लर्निंग जो मोटिवेशन है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, उनका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता है. So transparency is the major milestone that semester system basically brings in or achieves. So आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि लेट्स से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जिसको 5 मिले हैं वो जस्टिफाइड है. ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा आपको याद था या वो स्टूडेंट जो है वो आप उसको जानते हैं या उसके साथ कोई एफिलिएशन है, या आप जो है वो आप कह सकते हैं कि ही और शी इज नोन टू यू एंड यू आर गिविंग 5 मार्क्स. नो, उसकी जस्टिफिकेशन है आपके पास जो है वो, जिस तरह डॉक्टर फहद ने बताया कि कोई रूब्रिक्स बने हुए हैं, आपके पास रूब्रिक्स हैं कि आप किस स्टूडेंट को किस बेस पे जो है वो मार्क्स देंगे, या आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई मार्किंग स्कीम है. सो लेट्स से 5 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स में आप 0 कब देंगे? जब कुछ नहीं लिखा होगा ऑफ कोर्स, तब 0 होगा. लेट्स से अगर उसने एक चीज लिखी है या 2 लिखी है तो उसको आप 1 नंबर दे दें, और अगर ये और ये लिखा है तो उसको आप 3 दे देंगे. ठीक है. और अगर आपने उसने ये वाली चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है तो उसको 3 दे देंगे एंड सो ऑन. इसी तरह 4 मार्क्स की भी आपने डेफिनेशन दी हुई है, और इसी तरह 5 मार्क्स कब देने हैं उसका भी आपको पता है. और ये जो मार्किंग स्कीम है ये सेम है थ्रू आउट द कोहोर्ट. जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये सेम है, चाहे अब आप सुबह के टाइम पे पेपर चेक करें या आप शाम के टाइम पे मार्क करें, आप थके हों या आप फ्रेश हों, आप खुश हों या आप जो है वो गुस्से में हो, जब आपके पास ये वाली मार्किंग स्कीम है देन आई थिंक द मार्किंग शुड बी कंसिस्टेंट. और इसी की बेस पे ट्रांसपेरेंटली जो है वो मार्किंग होनी चाहिए. ठीक है. और इसी की बेस पे जो है वो आपकी क्या होता है रूब्रिक्स बेस्ड मार्किंग होगी, या मार्किंग स्कीम आपके पास सामने है तो फिर आई होप कि वो मार्किंग जो है वो कंसिस्टेंट होगी और कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आप जो है वो विदाउट एनी मार्किंग स्कीम मार्किंग करें तो देयर इज अ चांस दैट द मार्किंग इज बेसिकली अ बाइस्ड वन which is against the spirit of the semester system. Similarly, after marking the assessments or the
manuscripts, that this is a responsibility of the teacher to prepare the award list. So चाहे वो interim award lists है या वो final comprehensive award list है at the end of the semester. So to prepare the award list, not only to prepare the award list but also to display the results. So after each and every assessment, the results should be communicated to the student. So this is another aspect of the transparency of the system, कि हर असेसमेंट के बाद स्टूडेंट को रिजल्ट कम्युनिकेट हुआ है, रिजल्ट को डिस्प्ले किया है. सो ये रिजल्ट डिस्प्ले करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि असेसमेंट इटसेल्फ है. सो इससे ये क्या होगा कि ये अगर आपने मल्टीपल असेसमेंट्स ली हैं और रिजल्ट एक ही दफ़ा एट द एंड ऑफ द semester शो किया है, तो there is no difference between the annual system and the semester system. So in the semester system we have multiple assessments, and after each assessment the result should be displayed to the student so that the student may उनको आईना दिखाएं, उनको पता हो कि जी वो कितने पानी में है, ठीक है, ताकि वो अपना या तो वो कोर्स ड्रॉप कर लें, ये भी एक ऑप्शन है सेमेस्टर सिस्टम में, और या वो अपनी जो टाइम्स एंड एनर्जीज हैं उसको रीप्लान करें टू गेट गुड मार्क्स और टू इवन पास in any of the course. So displaying result is as important as the assessment itself. इसके बाद जब आपकी मार्किंग हो गई है तो अब आप जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम है, रिजल्ट को ग्रेड करना है. सो ग्रेडिंग के लिए दो सिस्टम बड़े कॉमन है. एक तो एब्सोल्यूट सिस्टम है, आप यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम. सो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम को मैं जो है नॉर्मली फिक्स बकेट के साथ इसको एफिलिएट करता हूँ, या आप कह सकते हैं कि जी ये एक फिक्स्ड ऑब्स्टेकल रेस है कि इसमें जो ग्रेड्स है उनका डिफिकल्टी लेवल है और वो फिक्स है, और जो बच्चा ये जो लेवल क्रॉस करता जाएगा उसका ग्रेड उतना बढ़ता जाएगा. या आप ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम में एक ग्रेड जो है उसकी बाउंड्री फिक्स है, लेट्स से वो 80 to 85 है या 90 to 95 है, ठीक है जी. सो जो बच्चा इस ग्रेड बाउंड्री में फॉल करेगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, और इसी तरह ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो फिक्स्ड है, रिजिड है. जबकि दूसरा जो सिस्टम है उसके अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है. सो इसमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन होता है. तो लेट्स से 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनका ग्रेडिंग करनी है तो 50 स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन होगा, और नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है जी. तो रिलेटिव ग्रेडिंग कैसे होती है, इसमें देखें जी हमारे पास ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ठीक है, ए प्लस से लेकर एफ तक. इसमें ए प्लस जो है वो मैक्सिमम ग्रेड है और एफ जो है वो मिनिमम ग्रेड है, और इसके अलावा डब्ल्यू, डब्ल्यू एफ, आई और आई पी ग्रेड्स हैं. ये भी आप ऑलरेडी इसमें सर्वे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर सम अदर ग्रेड्स दैट डू नॉट हैव एनी ग्रेड पॉइंट. अगर आप ये रेड रेक्टेंगल में ग्रेड देखेंगे तो इसमें हर ग्रेड का एक ग्रेड पॉइंट है, ठीक है जी. और ये जो ब्लू रेक्टेंगल है इसमें जो ग्रेड्स हैं इसमें ग्रेड पॉइंट नहीं है. तो ये जो ब्लू रेक्टेंगल वाले ग्रेड्स हैं ये कब होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. अभी हम रिलेटिव ग्रेडिंग को डिस्कस करते हैं, हाउ रिलेटिव ग्रेडिंग इज डन इन द सेमेस्टर सिस्टम. सो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम इज वेरी यू कैन से इजी. सो ऑल द ग्रेड्स आर हैविंग फिक्स्ड बाउंड्रीज. 80 to 85 है, फिर 75 to 80 है, और फिर इस तरह 70 to 75 है, 65 to 70 है. तो इस तरह हर ग्रेड की बाउंड्रीज जो है वो फिक्स है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में. जबकि रिलेटिव ग्रेडिंग में पीयर टू पीयर कंपैरिजन है. सो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द मेथोडोलॉजीज एंड द एफर्ट्स ऑफ द टीचर डिसाइड्स द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स. सो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स, let's say these are let's say 75. So these are basically dependent on the way the subject is taught and the assessments that are basically formed. So let's say एक टीचर डिसाइड करता है कि जी मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 75 आ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट लेवल था कि इसमें 75 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है जी. इसी तरह मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हैं वो भी डिफाइन किए जाते हैं. तो लेट्स से आप कहते हैं कि 25 मार्क्स एटलीस्ट हर स्टूडेंट के आने चाहिए. तो कोई भी स्टूडेंट जो है उसका एटलीस्ट 25 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है. सो यू डिसाइड द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स
and then you decide the minimum expected marks. अब वो वाले स्टूडेंट्स जिनके मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं, ठीक है जी, जिनके लेट से यहाँ पे मार्क्स अप्लाई कर रहे हैं, सो दे विल बी अवार्डेड एज एफ ग्रेड. और वो वाले स्टूडेंट्स जिनके मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आते हैं, दे विल बी अवार्डेड एज ए प्लस ग्रेड. और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 75 to 25 हैं, उनको आप ये वाले ग्रेड्स असाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू डी. और उनको ए टू डी इस तरह से असाइन करते हैं कि यू हैव अ बेल शेप कर्व, या एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक या दो या इवन कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका ए प्लस है, क्योंकि ए प्लस अगर आप देखें यहाँ पे ए प्लस और ए, तो इन दोनों का जो ग्रेड पॉइंट है वो सेम है, 4 है. लेकिन ए प्लस ग्रेड जो है, दिस इज बेसिकली फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट. एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसने आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस किया है और अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसको आप ए प्लस देंगे. अब अगर आप पेपर ऐसा आसान बना दें कि जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट से 75 मार्क्स ले लें, तो इट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस. और पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है वो बेसिकली एक फ्लॉ है कि आपका टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएं. सो बाय नेचर जो स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई एक या दो या तीन स्टूडेंट्स होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो बड़े ब्रिलियंट हैं, और कुछ 3-4 स्टूडेंट जो हैं वो डंप भी होंगे, और बाकी स्टूडेंट जो हैं वो एवरेज भी होंगे, कुछ एवरेज से बड़े हैं, कुछ एवरेज से कम हैं. सो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जनाब आइंस्टाइंस हैं, या वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बड़े ही ब्रिलियंट हैं और सबका जो है वो ए प्लस ग्रेड आ रहा है. अगर सबका ए प्लस ग्रेड आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द असेसमेंट डिज़ाइन. पेपर जो है वो बड़ा आसान बना दिया गया है. या आप कह सकते हैं कि अगर सारों का एफ है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि पेपर बड़ा मुश्किल बना दिया, पढ़ाया कुछ गया था, पूछा कुछ गया है, ठीक है. आप ये जिस तरह डॉक्टर फहद ने फर्स्ट सेशन में बताया कि जो टीचिंग थी वो लेट से लेवल 1 की थी, रिमेम्बरेंस लेवल की टीचिंग है, लेकिन अगर आपने पूछ लिया है उसको लेट से लेवल 4 का, अप्लाई लेवल, एनालाइज लेवल का पूछ लिया है, तो फिर स्टूडेंट की टेंडेंसी है कि वो फेल होंगे. और इसी तरह अगर आपने पढ़ाया C4 लेवल का है, एनालाइज अप्लाई एवेल्यूएट लेवल का पढ़ाया है, और आप उनसे पूछ रहे हैं जस्ट रिमेम्बरेंस लेवल का, तो ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है. सो आपकी जो मेथड है और जो आपका असेसमेंट है, दैट शुड बी बेसिकली बैलेंस, दैट शुड बी इन लाइन. जिस तरह का पढ़ा रहे हैं उसी तरह की असेसमेंट होगी, और असेसमेंट ही बैलेंस्ड होगी. अब यहाँ से पता चल जाएगा कि जो पेपर था वो बैलेंस था या नहीं, ठीक है. अगर तो ये वाली असेसमेंट आ रही है, ये वाली रिजल्ट आ रहा है जिसमें 1 या 2 स्टूडेंट ए प्लस है, फिर 3 या 4 ए में है, 4 या 5 ए नेगेटिव है, और इस तरह ये इंक्रीजिंग नंबर है, फिर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एवरेज हैं, बी नेगेटिव या बी ग्रेड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आता है, और फिर इसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि आपका पेपर बैलेंस था और आपकी जो ग्रेडिंग है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ठीक है जी. सो टू जस्ट रैप अप, फॉर रिलेटिव ग्रेडिंग द टीचर डिसाइड्स द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड देन द मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स. अब मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम जिनके मार्क्स आते हैं उनको एफ ग्रेड असाइन किया जाता है, और जिनके मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनको ए प्लस ग्रेड मिलता है. और जो 75 और 25, लेट्स से मैं इसको 75-25 नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स के दरमियान जिनके मार्क्स हैं उनको आप A to D ग्रेड्स इस तरह से असाइन करते हैं कि यू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि A प्लस 1 या 2 होगा, फिर इस तरह इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं, मैक्सिमम ग्रेड जो है वो B या C प्लस में आएंगे, और उसके बाद ये नंबर जो है डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और कोई 1 या 2 स्टूडेंट जो फेल भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो फेल हों, लेकिन एटलीस्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आनी चाहिए.
अब ये वाले जो ग्रेड्स हैं, हर ग्रेड का ग्रेड पॉइंट है और ये ग्रेड पॉइंट किस तरह से यूज होता है CGPA या GPA की कैलकुलेशन में, ये हम अभी बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये वाले कौन से ग्रेड्स हैं जिनका ग्रेड पॉइंट ही कोई नहीं है। ठीक है, ये WF, I और IP ग्रेड्स कौन कौन से हैं। सो इनको हम सेमेस्टर सिस्टम में नॉन न्यूमेरिकल ग्रेड्स कहते हैं। नॉन न्यूमेरिकल ग्रेड्स आर बेसिकली these WF, I एंड IP ग्रेड्स। अब ये क्या है, ये किस सिनेरियो में या किस सिचुएशन में ये वाले ग्रेड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को असाइन होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें से पहला जो ग्रेड है वो W ग्रेड है। W मीन विदड्रॉ, विदड्रॉ। So a student may withdraw a course within a 6 week from the start of the semester. स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर से लेकर बाय द एंड ऑफ द 6th वीक स्टूडेंट जो है वो विदड्रॉ कर सकता होता है कोर्स। अगर वो समझता है कि वो इस पर्टिकुलर कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसका वर्कलोड ज़्यादा है, या उसको साइड जॉब करनी पड़ती है, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, या घर में किसी की देखभाल करनी पड़ती है, सो वो अपना लोड मैनेज करने के लिए पहले 6 वीक्स में कोर्स विदड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। और upon the approval of the application to withdraw the course, the student will be awarded as W grade। ठीक है जी, और W ग्रेड देखें, इसका कोई ग्रेड पॉइंट नहीं है। तो ये वाला जो W ग्रेड होगा ये स्टूडेंट बाद में कंप्लीट कर ले, चाहे अगले साल कंप्लीट कर ले या 4 साल के बाद कर ले, या उसी साल में समर सेमेस्टर में इसको जो है वो क्लियर कर ले। ठीक है, इसका उसका जो CGPA होगा उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। CGPA जो है वो इसकी वजह से डाउन नहीं होगा। दूसरा ग्रेड जो है वो WF ग्रेड है। सो WF मीन फोर्स विदड्रॉल, फोर्स्ड विदड्रॉल, फोर्स W। ठीक है जी, फोर्स विदड्रॉल। अब फोर्स विदड्रॉल या WF ग्रेड जो है, दिस इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये कब होता है डिसाइड जी, ये आपने 15th वीक के एंड पे जो है वो डिसाइड करना है। बाय द एंड ऑफ द 15th वीक, सेमेस्टर 16 वीक का है, सो बाय द एंड ऑफ द 15th वीक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देखी जाती है। आपको पता है कि अटेंडेंस जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया सेमेस्टर सिस्टम में 75% का होता है। सो अगर किसी स्टूडेंट की 75% से अटेंडेंस कम है तो टीचर उसको WF ग्रेड जो है वो असाइन करता है। अगेन WF जो है उसका कोई ग्रेड पॉइंट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली कंप्लीट अभी नहीं हुआ, सो इसका GPA या CGPA पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर्स में या अगले सालों में इसको कंप्लीट करना है। सो आप कह सकते हैं कि W ग्रेड जो है ये इनिशिएट होता है स्टूडेंट की तरफ से, और WF ग्रेड जो है ये इनिशिएट होता है टीचर की तरफ से। ठीक है जी, और उसके बाद I ग्रेड है। I ग्रेड मीन इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। सो ये वो वाला केस है कि अगर स्टूडेंट जो है वो बीमार हो जाता है, he or she falls ill on the day of the assessment, और उसकी अटेंडेंस जो है वो 75% है और उसकी बाकी असेसमेंट पूरी हैं, तो स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाता। जिस तरह के हम देखा कि ओपनिंग सर्वे में 60% ऑफ द ऑडियंस वाज ऑफ द व्यू दैट द स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड एज F ग्रेड। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में अगर इसका जेन्युइन इशू है और उसकी 75% अटेंडेंस है उस असेसमेंट तक, और उसकी इससे पहले वाली जो असेसमेंट्स हैं वो पूरी हैं, तो स्टूडेंट को F ग्रेड नहीं दिया जाएगा अगर वो किसी असेसमेंट पर्टिकुलर असेसमेंट में अपीयर नहीं होता, बल्कि उसको I ग्रेड दिया जाएगा। I ग्रेड मीन इनकम्प्लीट। और I ग्रेड जो है इसके बाद आगे वाला पूरा सेमेस्टर होगा वो टीचर और स्टूडेंट के साथ आपस में वो कोई एक डेट डिसाइड करें, जो मिस्ड असेसमेंट होगी उसको कंप्लीट करके इस I ग्रेड को इनमें से किसी ग्रेड में जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। उसके बाद IP ग्रेड है जी। IP ग्रेड स्टैंड्स फॉर इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। So IP grade is particularly for the type C courses। टाइप C कोर्सेज हमें पता लिखा था कि वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है या जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि 2 साल के होते हैं, सॉरी 2 सेमेस्टर्स पे होते हैं। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, पूरे का पूरा फाइनल ईयर है। सो उसमें 2 सेमेस्टर हैं। अब बाय द एंड ऑफ द 7th सेमेस्टर अभी वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी कोर्स कंटिन्यू है, वो कोर्स अभी इन प्रोग्रेस है। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 7th सेमेस्टर में सारे के सारे स्टूडेंट्स को आईपी ग्रेड जो है वो दिया जाता है। आईपी मींस इन प्रोग्रेस। और ऑब्वियसली इसका अभी चूंकि वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ, वो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसका जो इफेक्ट है, ये जो जितने भी ग्रेड्स ब्लू रेक्टेंगल में है या नॉन न्यूमेरिकल ग्रेड्स हैं, इनका सीजीपीए की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होगा, बल्कि ये विदड्रॉ वहां से कर दिए जाते हैं। और ये वाले जो ग्रेड्स हैं A+ to F, जिनका ग्रेड पॉइंट है, they are basically used to calculate the CGPA or GPA of the students. So W means withdraw, force withdraw, incomplete, and in progress grades. So this is very much clear that when an I grade will be given to the student and when a WF or W grade will be given to the student when you are grading the marks, when you are grading the results. Now, how these grades are basically affecting the GPA or the CGPA of the student. Now, let me make it clear that this is not the responsibility of the teacher or the vice principal or the principal of the college to calculate the GPA or CGPA of the student. But there are some dedicated softwares deployed by the universities to calculate the GPA or CGPA of the student. But this is very important to understand how this stuff is calculated basically. So अगर एक सेमेस्टर है तो उसका GPA होगा, लेट्स से स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए। If there is only one semester we are dealing with, then the performance indicator will be grade point average GPA. और अगर एक से ज़्यादा सेमेस्टर्स हैं तो फिर CGPA होगा, cumulative grade point average. अब ये GPA और CGPA कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सो लेट्स से हमारे पास एक सेमेस्टर है और इसमें ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। सो आप इस कोर्स से आप देख सकते हैं कि कोई थर्ड ईयर का कोई एक सेमेस्टर है। थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर होता है या 6th सेमेस्टर होता है। सो थर्ड ईयर में 5th या 6th सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें ये 4 कोर्सेज हैं। हर कोर्स के क्रेडिट आवर्स का पता है और फिर एग्जाम्स के बाद, मार्किंग के बाद, ग्रेडिंग के बाद आपके पास ये हर कोर्स में ग्रेड आ गया स्टूडेंट का, और हमें पता है कि हर ग्रेड के अगेंस्ट जो है वो स्टूडेंट का कोई ना कोई ग्रेड पॉइंट है, ठीक है। सो बी ग्रेड है उसका 3 है, इसी तरह वो टेबल में पिछली स्लाइड है उसमें दिए थे। अब आपने जीपीए कैलकुलेट करना है, इसके लिए यू नीड टू कैलकुलेट द अर्न पॉइंट्स। अर्न पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू विल सिंपली मल्टीप्लाई द क्रेडिट आवर ऑफ अ कोर्स विद द ग्रेड पॉइंट ऑफ दैट कोर्स। सो आपने सिंपली इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 3 9। इसी तरह हर कोर्स के लिए करेंगे। 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 0 0। अब यहाँ पे देखें जिसका ग्रेड F होगा उसका मतलब है कि ग्रेड पॉइंट 0 है और उसका अर्न पॉइंट्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जीपीए कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप टोटल अर्न पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स कैलकुलेट करेंगे। सो जीपीए विल बी सिंपली टोटल अर्न पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स। द आंसर इज जीपीए। अब ये जो जीपीए है ये एक सेमेस्टर के लिए होगा, और अगर मल्टीपल सेमेस्टर्स हैं, लेट से 2 या 3 या 4 सेमेस्टर्स को आप डील कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए। सीजीपीए जो है ये मल्टीपल सेमेस्टर्स के लिए है। सो अगर आपने मल्टीपल सेमेस्टर्स को जो है वो डील करना है तो उसके लिए सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा? लेट से हमारे पास 4 सेमेस्टर्स हैं यहाँ पे। सो वी हैव रिजल्ट ऑफ 4 सेमेस्टर्स। हर सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स का हमें पता है और हर सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स का पता है, ठीक है जी। टोटल क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द सेमेस्टर क्रेडिट आवर्स विद द सेमेस्टर जीपीए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स आ जाएंगे। सारे
सेमेस्टर्स का क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम टोटल कर लेंगे, टोटल ग्रेड पॉइंट्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स सो फार एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स completed so far. So the CGPA will be simply total cumulative grade points divided by the total credit hours completed so far. The answer will be the CGPA. Now this GPA or CGPA are used to decide the progression of the student. This is very important to understand how these CGPA or GPA are basically used to define the progression of the student. By the way, progression, I mean whether the student is promoted to the next year or not. And if he or she is not promoted to the next year, then what are the other options for him or her? So student जो है उसके लिए दो, let's say मेजरली दो पॉसिबिलिटी है। नंबर वन कि अगर उसको फर्स्ट ईयर में है तो उसको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, सेकंड ईयर में है तो उसको थर्ड ईयर में कर दिया जाए, थर्ड ईयर में है तो उसको फोर्थ ईयर में कर दिया जाए, या अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसको सेकंड सेमेस्टर में कर दें, सेकंड सेमेस्टर में है तो उसको थर्ड सेमेस्टर में कर दें। क्या क्राइटेरिया है, पॉलिसी क्या है, किस बेस पे डिसाइड करें कि उसको जो है वो प्रमोट कर दिया जाए या उसको प्रमोट ना किया जाए, ये क्राइटेरिया क्या है? दिस इज बेसिकली प्रोग्रेशन पॉलिसी। तो प्रोग्रेशन पॉलिसी में जो सबसे पहली चीज है वो है प्रमोशन। द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और टू द नेक्स्ट ईयर। सो उसका क्राइटेरिया जो है वो CGPA, cumulative grade point average. So if the CGPA is equal to or more than 2 of the student, then the student is straightforwardly promoted to the next year. Obviously CGPA है तो पूरे का पूरा साल है। लेट्स से अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर्स का जो GPA होगा वो उसको CGPA में कन्वर्ट करके डील करेंगे। सो अगर तो स्टूडेंट का CGPA इक्वल टू और मोर देन 2 है तो उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रमोट कर देते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, अगर सेकंड ईयर में है तो उसको थर्ड ईयर में प्रमोट कर देंगे। और अगर उसका CGPA जो है वो लेस देन 2 है, अगर उसका CGPA लेस देन 2 है, आप ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन से साल में है। अगर तो वो फर्स्ट ईयर में है और उसका पहले दो रेगुलर सेमेस्टर्स गुजर चुके हैं और उसका CGPA जो है वो लेस देन 2 है, ही और शी हैज द ऑप्शन टू रिपीट द सब्जेक्ट्स। कैसे रिपीट करेगा? आगे जो रेगुलर सेमेस्टर्स हैं उसके बाद समर सेमेस्टर आना है, समर वेकेशन आनी है। समर वेकेशन में वो सब्जेक्ट जो है वो रिपीट करके अपना CGPA जो है वो इम्प्रूव कर ले, 2 या इससे ज़्यादा कर ले। और अगर उसका CGPA बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर 2 या इससे ज़्यादा हो गया तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रमोट हो गया। या फिर जो है कि वो प्रोबेशन पे होगा। ऑब्वियसली जो फर्स्ट ईयर है वो प्रोबेशन है। फर्स्ट ईयर में ये रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की कि उसका CGPA जो है वो 2 या इससे ज़्यादा हो। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए जो है वो रेलीगेशन है। ये भी क्वेश्चन था हमारे ओपनिंग सर्वे में कि अगर मिनिमम CGPA थ्रेशोल्ड जो है वो स्टूडेंट मेंटेन नहीं कर पाता तो वो उसको क्या करेंगे? उसको रेलीगेट करेंगे, उसको रीएडमिट करेंगे या उसको रिमूव कर देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज रेलीगेट, रिटेंशन। द स्टूडेंट विल बी रिटेन्ड इन द फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, उसका CGPA जो है वो 2 या इससे 2 से कम है, तो स्टूडेंट विल नॉट बी प्रमोटेड टू द सेकंड ईयर, बट ही और शी विल बी रिटेन इन द फर्स्ट ईयर। वो अपना फर्स्ट ईयर जो है वो जूनियर सेशन के साथ रिपीट करेगा until unless his or her CGPA is in this range। ठीक है जी। अब फर्स्ट ईयर के बाद उसका हर सेमेस्टर जो है वो प्रोबेशन पे होगा अगर उसका CGPA लेस देन 2 चला जाता है। और 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर्स में अगर उसका CGPA लेस देन 2 गया है तो स्टूडेंट हैज द the university will be dropping the student out of the university rules, or the student will be removed from the university।
और इसके लिए भी वो दोबारा एडमिशन अप्लाई करेगा, रीएडमिशन के लिए अप्लाई करेगा, और अपॉन द अप्रूवल ऑफ द रीएडमिशन एप्लीकेशन द स्टूडेंट विल बी रीएडमिटेड, और वो सारे जो है वो सारा काम दोबारा से करेगा। उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका ग्रेड जो है वो बी या इससे ज़्यादा है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी जो है वो उसको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह एक और प्रोग्रेशन पॉलिसी में एक जो फैसिलिटेशन है स्टूडेंट्स के लिए, वो फ्रीजिंग द सेमेस्टर है। अ स्टूडेंट में फ्रीज अ फुल सेमेस्टर ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन, मे बी कोई बाहर जाना है, या कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी है, या घर में कोई काम है, या पार्ट टाइम जॉब करनी है, या कोई भी जेन्युइन रीजन है, उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो एक सेमेस्टर फ्रीज कर सकता है। और ये ज़रूरी है कि सेमेस्टर फ्रीजिंग जो है वो सेमेस्टर के शुरू होने से पहले होती है। सो सेमेस्टर शुड नॉट बी स्टार्टेड। ठीक है जी, अगर सेमेस्टर फ्रीज करना है तो सेमेस्टर शुरू होने से पहले उसके लिए वो जो भी उसकी कार्रवाई है, उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्रेशन पॉलिसी। The student must have a CGPA of 2 or more to be promoted directly, or the student may repeat the courses in the summer to improve their CGPA if they are less than 2, and there is a probation. So first year जो है वो probation है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को 2 CGPA जो है वो मेंटेन करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो दे विल बी रेलीगेटेड और दे विल बी रिटेन इन द फर्स्ट ईयर। और अगर 2 कंसेक्टिव प्रोबेशन जो हैं वो स्टूडेंट जो है वो 2 कंसेक्टिव प्रोबेशन पे चला जाता है आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो स्टूडेंट विल बी ड्रॉप्ड आउट और मूव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रोल्स। So dear participants, this was all about the examination policies, gradings, and marking, and the progression policies. Thank you so much for your participation. Now the house is open for questions. I hope the time is already over, but we may take a couple of questions. So if anybody has any question, please unmute your mic and have your say, please. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर मजीद लेक्चरर कौंसा कॉलेज से बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब, आपने अभी कहा कि ये डिग्री कंप्लीट होने के लिए 124 टू 140 क्रेडिट आवर्स स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने होते हैं। जी हमारे यहाँ गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 142 क्रेडिट आवर बीएस के प्रोग्राम में बच्चों को कंप्लीट करने हैं। तो क्या बच्चे वो जो तकरीबन 7वें सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाते हैं 124 जो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया तक पहुंचने के बाद अगर वो 8वें सेमेस्टर में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता तो क्या वो डिग्री का एलिजिबल होगा बच्चा? डॉक्टर आमिर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जो 124 टू 140 की ब्रैकेट है, ये जब करिकुलम डिसाइड होता है, जब वो जो डिग्रीज डिसाइड होती हैं उसके लिए है। अब जो एक डिग्री प्रोग्राम है उसका लेट से 124 टू 140 क्रेडिट आवर्स के दरमियान किसी जगह पे हो सकता है, और एक दफ़ा डिसाइड हो गया कि लेट से 136 क्रेडिट आवर्स है या 140 क्रेडिट आवर्स एक डिग्री के लिए डिसाइड हो गए हैं, तो वो जो डिसाइडेड नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स हैं बेसिकली वो कंप्लीट होने चाहिए स्टूडेंट के, तब उसको डिग्री मिलेगी। ये जो ब्रैकेट या जो रेंज है, ये वो नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स एक प्रोग्राम के लिए डिसाइड करने के लिए है कि 130, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए रेंज नहीं है, बल्कि ये डिग्री के लिए रेंज है कि उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 124 टू 140 तक हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी इस रेंज में जिसकी वैल्यू जहाँ पे भी आती है, लेट से 136 है या 138 है या 140 क्रेडिट आवर्स हैं, या जिस तरह कि आपके केस में 142 क्रेडिट आवर्स हैं, सो 142 क्रेडिट आवर्स हैं वो उसका मिनिमम क्राइटेरिया होगा। वो जब पूरे हो जाएंगे तब उसको जो है वो डिग्री मिलेगी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर आमिर साहब। डियर पार्टिसिपेंट्स, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Or any comment? All right. If there is no question, then I will hand over the floor to Asif Saab, please. Asif Saab, over to you, please. Thank you very much, Dr. Amjad, for conducting this very valuable session for the participants. And this is time to take break, and we are taking break now.
this is lunch and prayer break, and we will be back at 2:30 sharp to start our next session. Thank you very much. So, dear participants, thank you so very much for your presence and joining our day 1 session number 3. जैसा कि शुरू में I have already requested कि थोड़ा सा switch है basically. Usually my session is the session number 1 followed by Dr. Fahad, and then Dr. Amjad has the third session on the grading policies. तो जो session number 2 और 3 जो हैं, they have already been done because I was pre-booked at some other important meeting. I was stuck there. So these are some of the expected outcomes that we have after the completion of these sessions. The 2 you have already done, and this session number 1, you should be able to meet all these 7 outcomes. So if we can read them, so once you have attended the whole day, you have been participative, you have been asking questions, you have been thinking, you have been listening, you should be able to explain the building blocks of a semester system. You should be able to identify the challenges in the implementation of semester system. You shall be able to illustrate the importance of continuous quality improvement for the meaningful engagement between the students and faculty. You shall be able to describe Bloom's taxonomy, describe various types of in-class assessments, set up the assessment cycle for your own programs, and then implement the policies of examination, grading, and marking. अब अगर अभी आप देखें तो this all looks very familiar. This has been covered. You have been exposed to the Bloom's taxonomy as well as different types of in-class assessments in a semester system. Dr. Fahad had his session as session number 1 today. Then Dr. Amjad, he explained the semester regulations, the policies that govern the life of students and the faculty. So these 2 are done. What is left is going to be covered in this session. So this is usually the session number 1, but for today, this is session number 3. So consider it as session number 3. So what we are going to talk about, we are going to talk about the philosophy of the semester system. What is semester system? And if you are working in an annual system and you have to make this move, this is a serious culture change. This is a serious paradigm shift. So we need to understand, why should we move? Why should we stop practicing what we are practicing now and start practicing something else? What are the key features of a semester system? Why should we feel attracted? Why should we altogether start changing our beliefs about the educational setup that we are breathing in? Then what are the building blocks of a semester system? What are the prospects and challenges, and how can we overcome these challenges in a culture change process? So this is a very brief outline for this session. As I have already told you that moving from an annual or a term-based system into a semester-based education, this is a serious paradigm shift. Now, when we talk about this term paradigm shift, this has become actually a cliche. But the root of this word is, when you shift the paradigm, you stop doing something and start doing something new. So, but this is something that demands very serious attention, the change of belief, the change of heart. Now, changing the belief is never easy. We need a strong motive. We need to feel inspired if we want to change. So in order to actually shake the beliefs that we hold or our practices, we need to question our existing practices so that the new practices can find some room. They can be developed and practiced. So why should we do it? And we have listed few questions here. We need to consider. When I say we, it means all of us, all the stakeholders.
all the parties actually, which I refer as beneficiaries in the opening of this day number 1. How many times as teachers we start with an end in mind? So this is one of the habits of the highly effective people. This is actually the title of the book, one of the book that has been written in last 2 decades. This is a great business book written in the North America, and the book title of the book is 7 Habits of Highly Effective People. And one of the habit is they always start with an end in mind. They don't start haphazard. You are on to a platform, you need to know the destination. You are in DG Khan, there is a, or in Rahim Yar Khan, Bahawalpur, wherever you are on a platform of the train station. You need to know what is your destination. If you want to go to Lahore or to Karachi, because it is only when you know that what is the expected end in mind, you will be able to prepare accordingly and proportionally. So now the question is, if we are working in an annual system where there is time and there is a curricula, and what we have to do throughout the year, we keep going into the classes and keep coming out of the classes. Going into the classes and coming out of the classrooms, does it constitute all that we are supposed to do as faculty, or it has a different meaning? Is it the end? Going into the class or teaching the class, is it the end or is it a mean? Teacher and time both are means to an end, which is the student's achievement in multiple dimensions. What he has been able to do after the interaction that we had with them. So the question is, the annual system compatible with this requirement? How many times we have this feeling that something is not working? Now, when do we develop that feeling in the first place? If you know that you are going to do something, you have planned something, and you have not implemented even a bit of it, even if you have not implemented any of your plans, how would you know that if the plans are working or not? It is only when the plans are implemented and executed, and there are consequences of those implementations, then you see the consequences and the plans, the intended results and the actual results, and then you compare them, and then you get to know that this feeling of something not working. How many times while designing an assessment, we think from learning perspective instead of being content focused? As I have already told you, that content, the syllabus, the time, and the teacher, they are all means to an end. The goal is different. The goal is students' achievement, the students' enrichment in multiple disciplines. which hand heart की बात डॉक्टर फहद ने अपने पहले सेशन में की, that there are multiple ways the students' development actually occur. The development occur in his brain, its mind, in his heart, the cognitive, the affective, and with the hands, the psychomotor. So what we have to do, we have to start thinking about the development that we have planned. How many times we do it? How many times we replace the course objectives with the students' learning outcomes? How many times, or do we have a mechanism to decide that who are the 20% least able? Like these 5 fingers of my hand, not all the students are equal. They don't possess equal capability, be it cognitive ability or the psychomotor ability or the affective ability. It is the job or the system's role that we have to make sure that all of them, they cross a certain threshold. How many times we do that? If you don't know, if you have not made any assessment, how would you know that what are the requirements and who are those least able students? There are practically not many means to get to know that who are the 20% least able students, unless
we assess them. How many times we assess the students during the annual system? Once. And after that assessment, we are not left with any remedial opportunity. If we want to make a remedy, if a part or some parts of our plan they didn't work, how would we ensure that the remaining students or those who couldn't achieve or the parts of the plan that didn't work, how can we improve them? Because the students, by the time you finalize your result in an annual system, the students are already gone into the next class. How during the course of teaching without making an assessment, we know if the teaching strategies are working? It's only possible if you continuously make assessments. If you assess multiple times and you assess continuously, you will be able to get to know that what strategies are working and what strategies are not working. And then can we make, by the way, in our tomorrow's session, when we will be talking about the process of communication, we will let you know that how can you gauge the abilities of the students. There are actually ways, but practically they need to be assessed so that we get that what works for what students. And then lastly, can we make any improvement in the content and the teaching methodology if we are not mapping our outcomes onto our plans? We need to always create a relationship between the consequences and the plans. The plans, when tested, there are consequences, good or bad. Those good or bad consequences, they actually let us know that if we need to change, improve, modify our plans or not. So this is what actually calls for this paradigm shift. Answering all these whys and hows shall help us change our belief. Our belief is that whatever we are working, that is perfect. That is why we are practicing. If we know of a method that is superior or that can be more useful in terms of getting what we can, you want to move from one city to another city. If you have got a car, you can get a car ride. Why should you wait for the bus at the train station or for the train at a train station? So there's a wastage of time. If you want to move from, if you want to move from Bahawalpur to Lahore, there are many ways. You can use your car, you can use the bus, or maybe from Dili Khan. If you want to come to Lahore, there are many ways to do it, many means to do it. So if you are available with superior means, why to try the inferior means? So this is how the system will work. But if you think that whatever you are doing, that's all in the world, then you will be having a constrained opportunity. We need to have an expanded opportunity. If a better system is possible that can serve the faculty and the students in a better way, why not to try that? All right, ladies and gentlemen, we all know that this is 21st century and we are almost done with first quarter of the 21st century, and being teachers or by profession we are in the faculty, what pedagogy skills we require to survive in this day and age. We need 21st century pedagogy skills. What does the 21st century pedagogy skills require? They require meaningful engagement of the students. How can we ensure the meaningful engagement? By seeking and giving feedback. How does the feedback help? It institutes the process of continuous quality. It improves the teaching learning process and the assessment strategies. What system allows multiple and continuous assessments? It is the semester system. And how can the semester system best facilitate the faculty and students? This is done through thorough understanding and the implementation of the semester regulations. So this, in our general practice, this is our session number 1, but today it is being done as session number 3. We are going to talk about the 21st century pedagogy skills, the meaningful engagement of the students, and the role of
seeking and giving feedback. How can this process be a helical instead of being a circle? Then what does the CQI or the continuous quality improvement does? Then it improves the teaching learning process. The in-class assessments, the summative and formative assessments. This was our session number. Generally it is 2, but today it was session number 1 today. And then we had our another session, that was our session number 2 today. So 1, 2, and 3. So we have talked about the semester system, the regulation, the importance of regulation, and you must have enjoyed those little case studies developed by our team that Dr. Amjad presented. And how can you differentiate between the letter grades and the non-letter grades, and fully starting from the numbers and going into the CGPA and the letter grades, how does the whole system work? And then the taxonomies of learning, the 3 learning domains. Dr. Fahad has spoken about this. So these sessions are already done today. So now the session number 3, which is originally the session number 1, is left. So what is the way forward? The way forward is the engagement, not only engagement of the students in a meaningful way. We have to interact with the students continuously. So there are 3 connotations of interactions: frequency of interactions, intensity of interactions, and mode of interactions. It's not all the time that we have to be in the class and teach. There are many ways to do it. And then we need to make multiple assessments. Frequency: every time there is an assessment, there is an interaction. The teacher has an expectation. He or she prepares an exam, and that exam is given to the students. And the students, they pick up the exam, they attempt it, and then they return it. So this is, if you are working in an annual system, this exercise happens once in the cycle, once a year, when compared to semester system, where every 4th week there is an assessment, at least. So if we compare annual to the semester system, we have almost 24 times more frequent interactions, because we have every time in spring, summer, and fall, we are every 4th week we are trying the students. Then intensity of the students, heightened intensity, because we are making the groups, not only the exam in the classroom, the proctored and fearful exams, we allow them for the group work. For the teacher is present but not speaking, we call it flip class, where the teacher has already given an assignment, or he has given a recording of his or her lecture, or maybe the material or the book chapter. There is no practical teaching. The teacher comes, write something on the board, and the class starts. For next 1.5 or 2 hours, they work in groups, they propose solutions, they discuss with each other, and then they bring up and present the solutions. Or there could be moots. They can argue for and against a topic, and there are multiple modes of interaction, because we have in our regular system, if we talk about the annual system, direct instruction is the only mode of teaching, and classroom based exams, they are the only way of assessment. And when we move to the semester system, there are multiple ways to teach, multiple ways to learn, multiple ways to assess. So this whole cycle requires continuous interaction between the students and the faculty. So here we have 21st century pedagogy skills. If we want to survive in this century as a teacher, we want to succeed, we want to create an impact. So what is an impactful teaching? An impactful teaching is the one that actually encourages and ensures lifelong learning. You learn something and that stays with you forever and ever, for longer period of time, rather than कि जब आप क्लास से बाहर निकले तो स्टूडेंट भी क्लास से बाहर and you forgot what you taught and they forgot what they learned.
Why does that happen? This is something which is going to be discussed here. So what we have to do in 21st century, teach in a contextual way. There should be a context because the context has a power. We need to utilize the power of the context. Even in marketing, this context is very important. When our emotions are stirred, we are watching a commercial. Just imagine or see or analyze or make an assessment of the commercial, what they are doing behind that particular product or service that is being marketed. There is a context. So the context actually help us to increase or enhance our motivation towards action. Because when we make a decision, most of the time we use logic. But when we are unleashing the action out of that particular decision, we need emotions on our side. So contextual teaching. Even if you have given them 5,000 numericals problem to be solved, and then they go into job market and they are given a contextual problem, a real life problem, they can't solve it. Why can't they solve it? Because they are trained to deal with numbers. When they are trained to deal with numbers, how can they solve problems? Numbers again, they are means. The end is the solution. So what we have to encourage is contextual teaching. And then as faculty, we need to learn the interdisciplinary skills. If you Google simple Fortune 500, Fortune 100 or Fortune 50, these are the topmost 500 companies, topmost 100 and topmost 50 companies. These companies come from different culture. Some companies come from Europe, some from North America, some from Far East. You talk about any company, talk about Apple, Google, Samsung, Ford, Rolls-Royce, Toyota, eBay, Alibaba. What these companies are doing? These companies come from different cultures. They have different values, but they have only one common denominator, and that is innovation. To stay at the top of ladder in any field, we need to continuously innovate. These companies innovate, and where is innovation occurring? Innovation is occurring at the crossroads of at the intersection of multiple disciplines. If you read or study a discipline in depth, most of the stuff is almost settled. Now it is the marriage between multiple disciplines that actually engenders innovation, inbuilt, stitches innovation. If we go into the depth of any particular subject, it will most likely stifle the creativity. What we have to ensure, we need to ensure that we use multiple disciplinary, interdisciplinary approaches when we are teaching. And then when we work together, we need to learn how to work in collaboration. Just imagine any day in your life when you are alone. Well, I can't imagine even a single day in my life since the time I can recall and I was independent. I have always been working with someone. This is how the game works. This is how the life goes. We need someone and someone needs you. So you need someone and someone needs you, and what we have to do, we have to collaborate with each other. We have to work together. But imagine the system we are practicing. Where are we encouraging the collaborative work? If someone needs you and you need someone, and that is a practical requirement in the job market, as universities and colleges offering these 4-year programs, where we are instituting this collaboration skill? Nowhere. We are not doing it. That is a clear missing link. We are not encouraging the teamwork. When we are teaching, we teach, they listen. They are empty vessels. And then we don't encourage the questions and no one asks questions. And then we make assessments. They are all individual assessment. You take a quiz. When was the last time you had a group quiz? When was the last time you had a group exam? You assess them individual.
You have a viva, it's an individual. You ask them to write a report, it's an individual. So it means that as a system, we are discouraging teamwork. But the 21st century pedagogy skills, they require collaborative work. We have to work in collaboration, and then we need to use problem-based learning to foster the problem-solving skills. I can narrate a very simple experiment, not experiment, it's a life experience, lifelong experience. 18 years ago, when I graduated from the university as a mechanical engineer, I can recall from those 18 years what has happened between these 18 years. And if I want to recall something from my undergraduate studies, I can only recall two things. My FYDP, final year design project, and one was my third year design project. Why can't I must have had like 50 exams, labs, then so much work I have done. I cannot recall even a single question from any of the exams. The reason the exams, they are different. They were not contextual. They were not problem based. I solved so many numericals, but I can still recall my final year design project. It was the design and development of a 1.5 ton air conditioner working on a non-conventional cycle. And my third year project was to design a solar still, a system that can be used to purify the muddy water, because we were given that this system is to be designed for some people who are living in Thar. So it had a context. It had a context. Sorry, अगर light में नजर नहीं कुछ आ रहा तो there was a disruption. So contextual. It was a contextual problem, and we worked in groups. There was a problem at the heart, not the solution. The solution was driven from the problem, and it fostered the problem solving skill despite the fact that I did not use these skills for past 18 years. I never designed an air conditioner. I never worked with the solar systems. But even today I can recall those things. And these are the reason. Contextual teaching, contextual work, collaborative and teamwork, problem-based learning, they actually help me to have these problem solving skills institutionalized in my mental framework. And then the 21st century pedagogy skills, they require us to assess transparently and also develop some thinking skills. ये जो higher order thinking skills and lower order thinking skill पे अगर बात हुई है HOTS and LOTS के ऊपर, तो what are the higher order thinking skills? We need to institutionalize these thinking skills first in ourselves, and then we have to prepare those assessments in a transparent way. So the same thinking skills, the same problem solving skills, they are instituted among the students as well. Last but not the least, by the way, this list is not exhaustive. You can always add something into it. We have just for the sake of discussion, we have brought these skills. ICT, information communication technology skills. We need to know these skills. Just imagine there was no technology, or the technology, we were not exposed to this technology, and this corona pandemic is here. It is only because of the technology that you people are sitting sometime in your homes or in offices in DG Khan, and we are sitting in Lahore and we are still connected. Despite this serious and major disruption, life goes on. The credit goes to the technology. Same is true for our general teaching learning process. Can you hear me? Kindly confirm कर दें क्योंकि light की disruption थी. Yes, okay. Yes, sir. So the information technology, like 50 years ago, if there was a company and there was no concept of using computers, then computer was a disruptive innovation.
Imagine a company that existed in 1970s and they refused to be compliant by the adoption of the computer and the data-driven systems. The company cannot survive. If you were a newspaper, for example, and you said, okay, we will keep it the paper based, we will not go for the e-newspapers, the company can't exist. Same is true. If we are not using these tools, the students will not be exposed to these tools. If they are not exposed to use these tools, how will they employ these tools when they will go into the job market? So what we have to do, we need to keep scanning. We used to have the blackboards when we were students. Within these last 20-25 years, everything has transitioned from blackboard to whiteboard, from whiteboard to smartboards. The multimedia stuff. Now your wall is your board, the smart board. Your computer screen is on the wall. You keep clicking just like this screen. I'm using slightly modern computer. I can write on the screen. So previously this was not possible. Now the technology is here. Otherwise, I need to use a mouse, or just imagine, or the keyboard where I have to keep using this mouse, and it may not be that effective. So there was a new technology available, and I thought it is worth implementing. So we are using it and benefiting. So these are the 21st century pedagogy skills. How can we use these 21st century pedagogy skill before we actually plan to use these 21st century pedagogy skills? Why do we have to do it? That is very important. And the ultimate goal is the meaningful engagement of the students. And these are the three pillars of the meaningful engagement, the three vertices of this triangulation, the triangle between the teacher, the student, and the curricula. A teacher is not dealing with all the students who are registered in your college. At one point of time, a teacher is dealing with 50, 70, 80, 100, or any number of students who are registered in that particular course. So the teacher wants to have, or should have, or must have a relationship with a section of the students who are registered in his or her module. So there is a relationship between the teacher and the student circles. And then the teacher is not supposed to be expert in everything. So if I talk about myself, for example, out of 45 courses that mechanical engineering offer, I can teach a few only. 4 maybe, 5, but I have already taught and I'm expert in those courses. So my expertise is limited to a certain section of the whole curriculum. And then the curriculum and the students, they are not studying everything at the same time. When they are in the first semester or in the first year, they are studying a particular part of the curriculum. So only the relevant curriculum, the relevance is between the students and curriculum. The expertise is between the teacher and the curricula, and the relationship is between the teacher and the student. What is this relationship? There are multiple ways to do it. What we actually suggest, we recommend, and you can find many ways to develop relationship. If you want to develop a synergistic and a positive relationship with the students, there is a condition. Two conditions, 1 and 2. You need to make sure that you drive the fear out of your classroom. Please do not create an environment of fear where asking the question becomes a liability and it demands punishment. If you give these signals, tomorrow again when we will be covering communication, we will be exposing you to different techniques that you can employ, how this fear can be driven out of this interaction between the faculty and the students. So drive the fear out. Number 2, if your class is getting or giving an impression of boredom, this relationship will be muted. No relationship, no meaningful engagement. If the teacher is not expert, there is only 1 or 2 teachers and they are teaching everything.
Now they are jack of all and master of none. There is no expertise, no meaningful engagement. And if the curriculum is not structured in an appropriate way, there is no relevance. And when the relevance is muted, so is the meaningful engagement. So with 21st century pedagogy skills under your belt and understanding the foundational principle of meaningful engagement, you can employ the tool of continuous feedback. You can give feedback, seek feedback. Giving feedback to the students shall improve the students. Seeking feedback from the student shall improve the teacher. So this is how system works. We call it 5 R's. 5 R's of meaningful engagement. How this feedback system should work. At R1, the student brings something. You give very specific feedback that redraft this, redo that. He or she does it, comes back. Now they have done what you asked them to do. Now you give them new assignment. New assignment means you are asked them to solve the same problem multiple times. You encourage them to do a lot of practice. When they do a lot of practice, they master the skill because practice is the mother of all the skills. So you ask them to solve or do the same problem multiple times. And then when they do it a lot of time by rephrasing and repeating, by changing numbers and looking at the impact of the numbers or the build the scenarios, and at the end, what are the impact of every and any scenario, you move them to similar. Now you don't give them the same problem. Now you give them the similar problem. The concepts that they gather while they were solving the same problems, they shall employ those concepts to solve similar problems. What's happening? As the degree of R is improving from R1 to R2 to R3 to R4 and for R5, the teacher is stepping back. When the teacher is stepping back, he or she is creating a space for the students. Unfortunately, because of this lack of training to this teaching learning process, we occupy so much space in the classroom that there is no space for the student to dance in a metaphorical way actually. We need to create the space, and the only way to create a space is to create independent thinkers. We need to step back. When you step back, they will move a step ahead. So from same to similar, from similar to unfamiliar. So this is how this training is progressing. The independence of the student is increasing and the involvement of the teacher is becoming more passive. Teacher is highly active here, and as the degree of R is increasing, the teacher is becoming less active and more passive. The student is becoming more and more independent. And when he comes here, he is almost ready to go into the marketplace to do his job. Where even from unfamiliar, he goes for very different problem, very unfamiliar problem, but he has acquired all the skills by which he can solve any problem. He can study the problem. He can research the problem. He can find the existing solution proposed by others to that particular problem. And then he will see what are the problems with those solutions. And he will solve those problems with the solution. The solution will be refined, and then he will record what he has done. So when he has learned how to research and record, that is the pinnacle. That is the end point. That is what is intended. Now imagine just with the way we do it in a conventional semester system or in a regular annual system, where we are encouraging them to be independent. We are asking questions that are given in the book. We are not helping them to flare up the thinking process. And at the end, what we deliver
are the students who rely a lot on their memory skills. They don't develop their higher order thinking skills because this cycle of this Z cycle we call it, this way and that way, this is clearly missing in the whole scheme of things. We need to improve the scheme of things, and we can only improve the scheme of things if we start asking questions, if we start questioning our existing practices. So these are the three things that should be done together. The 21st century skills must be employed with the help of feedback to ensure the meaningful engagement. Then we have the learning pyramid. What does this learning pyramid do? Dr. Amjad may have explained a bit of it to you that when we grade the student, this is how student achievement is spreaded. Some of them, they are all A plus, others maybe F. In between A plus and F, we have a whole spread of the grades, the spread of their achievement. Some A minus, A's, A minus, B plus, B's, B minus, C plus, C's, C minus, D plus, D's and D minus. This is how grades are spread. But what happens if you get a curve like this? This curve is actually the same curve but negatively skewed. This curve is same curve but positively skewed. If you don't understand the skewness of data, let me explain this in more general way. इसका मतलब ये है कि सारे fail हो गए. And this means all of them, they got 95% plus. What we do, there's a general behavior on our part as faculty. If everyone gets 95%, we have the tendency to actually claim the credit. And when everyone fails, we shift the responsibility. Ladies and gentlemen, the responsibility cannot be shifted. The responsibility must stay with the same side. If you are taking the credit of this, you must be ready to take the discredit of the F as well, because this is the same situation. They are equally not good. What we have to do then? We have to go for the roots. We have to see the causes. What causes F? And extreme underachievement. And what causes this A? To understand this, let me refer back to the session Dr. Fahad did today, the Bloom's taxonomy, the remembrance. We start from here, understanding, application, analysis, evaluating and creating. I hope you understand all this by now, but just to make up a point that why do we get this negative skewness is because you are testing the students at a higher level. If we talk about the cognitive level only, you taught them at lower cognition. So as an example, again another personal experience, if you are somebody who graduated from the conventional public schools, in a art school कहते हैं, the mud houses at that time in early 90s, कच्चे मकान थे स्कूलों में, 2-3 rooms, 5 classes, a village school where I graduated. The way we remember the table, it was the concept of Duni, the table of 2. Ek Duni Duni, Do Duni Char. I don't know, maybe you are from the elite schools or the private schools where you learned it 2 times 2 ones are 2 and 2 twos are 4. But this is not the way. We started learning English in our grade 6. They didn't know anything about English in our first years of throughout our elementary education. So, ek duni duni, do duni char. And at that time, I didn't understand what duni was. So, without knowing duni, remembering the table of 2 is remembrance. I was operating at this. And then we were told that do duni char means 2 plus 2 equals 4. It means we understood duni was 2. And when 2 and 2, they make it 4. And then one day we were given 5 buckets and every bucket had 2 balls in it. The buckets were closed.
and we were asked the question that every bucket has 2 balls, how many balls there are in the whole system. Because we knew that 5 times 2 is 10, we applied whatever we understood and whatever we remembered. Now we moved here, the application level. So now, how is this relevant to this? If you have taught them this system problem and you assess them by just asking what is 10 duni, they will say 6. 10 duni 6, everyone will say that. So there will be an overachievement because you taught them at cognition level 3 and you tested them at cognition level 1. You will find them overachieving. And if you teach them ek duni duni, do duni char, and they do not understand the purpose of or the meaning of duni, and you ask them to solve the system of balls or buckets, they will not be able to solve the system of balls and buckets because they were trained and taught at C1 and assessed at C3. Everybody is likely to fail. Most of them will fail. So what do we have to do as faculty, ladies and gentlemen? We have to create a synergistic relationship. We need to see what we are teaching and what we are assessing. So teaching and assessment, they must not be disaligned. वो misalignment वाली slide अगर आप recall करें, they must be perfectly aligned. The level at which you are teaching, the assessment needs to be commensurate with the same level. Teaching at higher level and assessing at lower level shall result in overachievement. Teaching at lower level and assessing at higher level shall result in underachievement. So that is again, if we are in the semester system, multiple assessment, we make one assessment, we find overachievement, we go back and we can fix the screws. And if we are not doing it, it means that we are, even if the system is semester system, we are keeping the spirit of the annual system. So when you set up the whole cycle of assessments and the feedback system is set up in the classroom, what are the benefits? Having a feedback system institutionalized in a semester system, it brings the class, brings into the class the assessment and learning process. Even while exam is going on, just imagine, abhi recently आपने ये देखा होगा social media and the electronic media, there was a lot of hue and cry on the student part that they don't want to go for the online exam. First they were saying that we want to go for the online exam, and then they don't want to go for the online exam. Open book exam is a great opportunity, a learning opportunity. In regular exams, when the student solves problem given in the book, given in the exam, they only appreciate their memory. Whatever is in their memory, they apply that. But if the open book exams are set up well, there are chances that even during the assessment, they will learn. Then we can target the gap between the current and the desired performance. You want them to go there. They are current. This is the state 1. This is state 2, S2. And when you assess them, they are at S1. So S0, you want them to go to S2, but they have only managed to reach S1. This is the gap. You need to target this gap. This gap provides the opportunity for improvement. This is what we need to look for, that where are the gaps. Then if we are doing continuous and multiple assessments, we actually support the self-assessment and self-correction. We improve as teachers. If our prior plan didn't work, we need to see what parts of the plan didn't work. The semester system is providing this opportunity. Every 4 you make an assessment, you mark the exam, you see you wanted them to be here and they are still struggling. Why they are struggling?
Is it a problem with the teaching methodology, or is a problem with the assessment, or is a problem with maybe some prerequisites? The students, they have not covered enough prerequisites. They don't know the prior knowledge. You want to teach them advanced physics, they need to know the foundational concepts in or the fundamentals of physics. Then this system, it looks like we are doing the same thing, but it's not. Just put a small ring here. This is a spring. If you keep moving this ring, after a few revolutions, it will be on to the other end of the spring. Helical progress. We teach, we assess, we learn, we teach again, we assess again, we learn again. So this continuous improvement cycle keeps moving on and on and on. And then it develops a connection between the actions and consequences. We can't choose consequences. There is no way you can choose consequences. If you want to have the consequences of your own choice, you need to learn from the consequences and improve the actions. It is only the improvement in actions that can unleash the improvement in consequences. वरना तो वही है कि अनोखा लाडला खिलने को मांगे चांद. You want to improve the consequences, but you are not learning from the consequences. Just imagine in an annual system, where is the opportunity for learning? If you have one exam at the end of the whole year, by the time you make an assessment, the students have already started learning the next year. So the connection between the actions and consequences, this feedback loop is missing. We need to restore this feedback loop. By the way, if our practices are the way we conduct semester system, if the spirit is missing, it is same as old thing that was in the annual system, please. It reveals the process of learning, and then it uncovers the importance of making mistakes and taking risks. Instead of having a full 100-mark exam, you have exam in chunks, 10 marks, another 10 marks, another 30 to 40 marks, another 40 to 50 marks. So you can do a lot of experiments. You can take risks, and they can take risks. The assessments, they need to ensure that this risk taking becomes a practice. For example, if you have to make a decision, every decision you make has some risk involved. Even the decision that involves that you will not decide, a decision that you will not decide is a decision itself. So every moment we are making a decision, whether we have to get out of the bed or not is a decision. We want to go into office as a decision. You have conducted a class assessment, you want to mark it today or tomorrow is another decision. So when you are professionals, we are continuously making decisions, taking risks. Now scan the whole process of the 4 degree that we conduct as professionals. Here we are encouraging the decision making and the importance of making mistakes, not repeating them. When they make mistakes, you should not say that this is a blunder. Ask them that repeating a mistake time and again can be a blunder, but making mistake is good because it is only through making mistakes that they can learn the importance of taking risks. Ladies and gentlemen, these are some of the prospects that semester system shall bring in. So I will not speak about much. I will only talk about here clarification of expectations and accountability. The system create more transparency. You must have learned in the session number 2 today that at the midterm, teachers are supposed to show the marked exam to the students. Marked exam. If you do it, वो जो स्टूडेंट क्लेम है, द ग्रीवियंसेस जो हैं कि जी हमने एक ही जगह से तैयारी की थी, आई गॉट 70 एंड माय रूममेट गॉट 95 exam. You can explain them, this is how I mark. The system becomes a lot more transparent. When it is transparent, transparency shall actually encourage them that their grievances are redressed automatically, systematically, and continuously. And then you need to know this.
importance of clarifying the expectations. This is another reason that engenders those grievances, that we don't clarify the expectations. Last year, January, just before coronavirus hit our country, I asked my son, who was 10 years old at that time, I asked him that you are growing a big lad as tall as myself, that you need to play some part at home. And like every kid, he said, well, what do you want me to do? और मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या? मैं क्या करूं और मुझे क्या मिलेगा extra? And the deal was, if he can polish 3 pairs of shoes every day, he will get some extra time to play at their friend's place. The deal was done. Few weeks later, I noticed that the shoes were not polished. I called him. कि ये shoes तो polish ही नहीं है, and you had the stayed extra. You are violating the expectations. He said, I'm not violating the expectations. Now there was a rough argument. The temperature goes up. I said, you are violating the expectation. He said, no, I'm not. I said, is this how the polished shoes look like? Uska jo response tha, it simply stunned me, and I learned it from there. It's not a very old learning, it's a new learning. He said, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं है कि how do the polished shoes look like. I picked up the polish, the brush and the shoes, polished them, showed it to him, and it has been 1 year. There was no grievance. Accountability becomes positive. Otherwise, in our culture, the accountability has a lot of negative connotations. And one of the chief reasons for these negative connotations is the lack of clarification in the expectations. The teaching will become more responsive. Teacher is giving feedback, seeking feedback. The students, they are self-directed learners. Flexibility, as you may have learned in session number 2, that the concept of core requisites and prerequisites and electives and optional subjects, student can choose the subjects. This is the spirit. And then rubric-based assessment, benchmarking, continuous quality improvement. When you have those prerequisites and core requisites divided into the semesters, better curriculum planning, the unit time for semester is 1 week. And in a year, it is 1 year. So when you move from 1 year to 1 week, you are planning week-wise. You are actually utilizing it more effectively, the time that you have in the semester system. These are the building blocks of the semester system. The blocks and bricks, student-centered delivery, credit hour. So I will not speak much about credit hours because we have already had this session before. You need to know how does this credit hour system work. What is 3 plus 1 or 3,1? 3 is theory. What is the difference between the theory and the lab? When we translate the credit hours into the contact hours per week, CQI is progressive. Multiple assessments made, final, end, quizzes, semester project, final year project, learning focus, that semester regulations, GPA and CGPA. You have learned how to calculate. कि अभी भी आप काम वही कर रहे हैं. But the system translates it into GPA and CGPA. What is 3 out of 4? What is 3.5 out of 4? Then the flexible subject selection. Student has choices, electives, core requisites, prerequisites. As faculty members, we need to understand all these building blocks. If any of the building block is missing, this triangle, the house of semester system shall not be completed. So when you understand that these are the prospects and you change your belief, you know that these are the previous slide, the building blocks. You know the building blocks, you are quite motivated. Now what are the challenges? Whenever you want to try to change the paradigm, change the culture, the biggest challenge is the transformation inertia. Like material objects, ये मोबाइल मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, unless I move it or I'm dead, the mobile shall stay here.
it will not move. जो human inertia जो है, mental inertia is even greater. Transformation inertia. We don't change. We don't want to change. We want to keep going on with our existing practice, because these existing practices, they have turned into our beliefs, and the beliefs, they are circular in nature. And just imagine, this is a triangle, the 3 start points. This is a square, 4 start points. What is the start point in a circle? Circle has no start point. Where to start? Beliefs are circular in nature, hence they are difficult to interrupt and disrupt and change. So transformation inertia is the biggest inertia. So जैसे इकबाल को अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें भी यही है कि तर्ज़े कौन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में. We want to go on with whatever we are practicing. We don't want to change. This is natural, and we have to make a deliberate effort to change. Some people change, others don't. Now the situation is even more critical. We are playing with a softball and we are trying to pull it apart. We will simply tear it apart. Then the regulation, we need to understand the regulation as explained in session 2. Better course planning, assessments, formative and summative, that are required in the semester system. So this was our session 1 today, these two. This was our session number 2 today. And then we have the LMS, the learning management system. These things lie with the institutional leaderships. It is the responsibility of the people sitting at the top to transform this culture, to make it more synergistic, to make sure that these learning management systems, they are there. This is your job, ladies and gentlemen. If you are working in lower cadres, you are a young recruitee, you are assistant professor or a lecturer, or whatever you are, even associate, when you are teaching, you need to know the regulations. You need to know the contemporary assessment methods. You need to know how better course can be planned. And as we are progressing this to be, professing this to be a culture change process, keep an eye on. When the culture is changing, it will look difficult. Please do not get discouraged by those difficult times. This difficulty is a sign of culture change. You may find a push if this culture has to be changed. Even this change in direction is required, because if you keep going in the same direction, the way you are going, it means the beliefs are not changing. If the beliefs are not changing, the result will not change. Then the deployment, even if you are finding things difficult and you are sensing a change in direction, but there is no deployment of resources, the faculty resources, the infrastructure resources, the training related resources, they are critically important. And you can take this deployment, like this is an opportunity for us and for you, if you want to understand the semester system. So this could be considered or regarded as the first installment of deployment of resources. And then the end is development. So from difficulty to direction, development, after deployment, the development is guaranteed. But if the deployment quadrant is missing, then difficulty is for the sake of difficulty, and the change in direction could be a wrong way. One way traffic है, आपने उधर गाड़ी अपनी डाल दी है, and there will be no development if we are not deploying the resources. When this culture is changing, these are very critical times. We need to make sure that people behave in an appropriate way. We need to look for the behaviors, and behaviors are actually not the roots, they are leaves. पत्ते हैं वो, जो जड़ें क्या हैं, जड़ें वो belief हैं जहां से behavior का पौधा जो है वो निकलता है. We categorize whenever we deal with the culture change, institutions हैं, academic institutions या industrial clients, whenever we deal with them, we categorize people in 2 ways.
These are the people who are below the line. You need to see who are the people who are below the line. Look for these behaviors. Because we can't see the beliefs, but beliefs generate behaviors. We can see the behavior and read into the beliefs. People are confused. There is confusion. Every time they are asking, sir, madam, tell me what to do. Then if there is a job, there is a denial. It's not my job. Someone else should do it. Then there is a challenge. Whenever there is a challenge, people have a tendency to bury their heads in the sands. They deny. This implementation of the semester system is a challenge, followed by another challenge, which is the implementation of the outcome-based education. These two challenges are knocking at the doors of the college level education, as well as the universities, especially the new universities. Now, if we say there is no challenge, we bury our head in the sand. We are denying this is below the line behavior. Then, when something goes wrong, people point fingers. मैंने नहीं किया, ये उसने किया है. Negative behavior. And whenever you are doing it, you only do your part, your little part. You don't care about the whole. The holistic approach. What is the systematic approach? What is the system strength? For example, if we have 11 plus 10, the answer is 21. But if you multiply 11 and 10, what do you get then? You get 121. System has the multiplicative power. It multiplies the energies. So if we are covering our tail, बस अपना काम मेरे पे बात ना आए, बस इतना मैंने काम करना है. वो जैसे हम यूजुअली घरों में करते हैं, अपने घर का कूड़ा साफ करके गली में फेंक देते हैं, फिर गली से चल के घर में आते हैं, पाँव के वो कूड़ा अंदर आ जाता है. Next morning we do the same exercise. We are just covering our tail. It's a negative behavior. So who are the people who are above the line, by the way? These are the people who see it, own it, solve it, and do it. These people are worthwhile. They are valuable. They must be honored. They should be granted all that could be granted. They need to be encouraged. They are the owners of the process. They are not behaving like slaves. They are behaving like owner. They see a challenge. They own the challenge. They volunteer. They don't understand much, but they say, we will get to the roots of the problem. We will try and solve it, and we will keep doing it. This is the way the system should be honored, actually. The ownership needs to be institutionalized. What we need to do is, we need to understand EBAR. E is experience, B is belief, A is action, R is result. When we talk to each other, we need to generate positive experiences. These experiences shall change beliefs. When the belief changes, actions change. When action changes, result change. When result changes, culture change. Thank you so very much. This is the end of this session. If you have any comment, Miss Hina Mubin, what you want to repeat, actually, me to repeat, can you please say that? Because you have in the chat box, you have written that please repeat last thing. Well, the whole lecture is the last thing for me now. Don't know what to repeat. Actually जो आपने last में कहा है ना, experience, E means experience, B behavior. Okay. All right. So this is a whole, actually, when we deal with the culture change, there is actually, चलिए आगे थोड़ा draw कर लेते हैं, खाली slide. We are here. This is the way. This is E, E1, B1, A1, and R1 all together. This is C1. So if you are in poor culture, a culture where there is a leg pulling, where people don't feel happy, they don't actually encourage questions, there is a fear, the culture of fear, and we want to transform this culture. मैंने शुरू में कहा ना, क्लासरूम भी एक कल्चर है.
If you want to do that, how can you do that? To do that, अब आप चाहते हैं जी कि usually हमारा focus ये है as administrations, as head of the departments, even as teachers, we want results and we ignore what lies beneath. We have experience, then experience driven beliefs, and belief driven actions, and action driven results. So this is how things should move. So if you are trying to change the culture from C1 to C2, what you have to do, you need to focus on the what kind of experience you are generating. If you are generating experience of type 1, you will generate a culture of C1. If you want to go for culture 2, a culture where people take ownership, the ownership and fear, they cannot exist together. They are mutually exclusive. So go to E2, B2, A, and R. So by doing this, the culture will be transformed. बस ये खा लो मेरी जान ये होते खा बहुत है जी Madam, please अपना mic बंद करें kindly. Closing survey for this day number 1 into the chat box. You are supposed to, these are the same questions. The questions that we presented in the morning, those have been again presented to you, and then we will be able to see how effective this day has been. So before we go for the communication training tomorrow, we will update and we will ask if we have not found enough surveys filled. So please follow the link and fill the closing survey. The closing survey has been posted into the chat box. Please open the closing survey and fill it. So we have around 35 plus participants and we are expecting same number of the survey responses. Kindly survey को fill करना है और by the way tomorrow before we start we are going to ask you again if there are not enough, because we had around 22 or 23 respondents in the opening survey. The same number of responses are expected in the closing survey. So kindly feel courageous and fill it. These are anonymous surveys. There is no punishment for that. Please don't feel fear. This is a mutual respect actually. We need to respect each other. And this is, if you fill it, we feel honored that you have honored what we have requested. So kindly fill the survey. And if there are no other questions, we can terminate the session here, and we hope to see you tomorrow. So if there are no questions, but please again we are requesting you need to ask questions. तो वो एक शेर था ना कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में शुमार ही कैसे करूं जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं, शायद थोड़ा सा उल्टा इससे. तो we need to have dreams, we need to ask questions. Questions or asking questions is actually a sign of life. So ask a lot of questions, because otherwise these training sessions, they will become monologues, and still you will benefit, but the degree of effectiveness that will be reduced. So we encourage कल का जो session है communication पे, if you don't ask questions, then we will point you out and we will ask you to speak up, because as a teacher we always find an opportunity कि कहीं बोलने का मौका मिल जाए. So why should we be silent? So if there are no questions, it is over to PHEC for the proper closure. But please do fill the surveys. Asif Saab, over to you. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much for being available to conduct this session. Thank you so very much. And dear participants, as Dr. Shahid said, that please fill this survey form, which has been posted by
our respected resource person, and that is actually a closing survey for day 1, and another survey will be posted tomorrow by Dr. Shahid Imran, and the next session will start tomorrow at 10:15 a.m. And you all are requested to please be online at least 5 minutes before, so that the session may be started on time. Thank you very much. I once again thank you, Dr. Shahid and his team, for being Thank you. available to Thank you very conduct much. this. Thank you very much, sir. Thank you. Allah Hafiz.